Clearly stated that the real form of the banyan tree, which is the original spiritual form in the spiritual world, cannot be understood in this material world. तो प्रभु बताते हैं कि वो जो वट वृक्ष है उसका जो प्रतिबिंब इस भौतिक जगत में है, इसको समझना बहुत ही कठिन है. Prabhupada says that the Supreme Personality, through the association of persons who are actually in knowledge of the Supreme Lord, that mercy is required. तो परम भगवान को समझने के लिए ऐसे लोगों का संग चाहिए जो परम भगवान को जानते हैं और उनकी कृपा की जरूरत है. So this is leading up to our discussion before talking about this Prabhupada's purport, is that without Krishna's mercy and Krishna's representative bona fide authorized guru, without their association and hearing from them, we cannot understand about that transcendental subject or transcendental topics. तो कहते हैं बिना कृष्ण की कृपा के और कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के हेतु की कृपा के इस दिव्य विषयों को हम नहीं समझ सकते हैं. And without understanding everything even materially and how that's connected to Krishna, we cannot also properly understand even materially. तो अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से भी नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे ये सारे विषय कृष्ण से संबंधित हैं. Therefore, Prabhupada says one must learn detachment from all things material by discussion of spiritual science based on authoritative scriptures. तो इसलिए प्रभु बताते हैं यहाँ पे किसी को अपनी आसक्ति हटाने के लिए इस भौतिक वृक्ष से दिव्य विषयों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए. So how do we purify our mind and senses? How do we get free from the material attachment, material contamination platform? तो कैसे हम अपने मन और इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं, भौतिक विषय आसक्ति के स्तर से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं. And all of that is described step by step in these bona fide scriptures or authorized scriptures. और इन सभी को एक एक करके प्रमाणिक शास्त्रों में विवरण दिया गया है. And one must hear those authoritative scriptures from persons who are actually in knowledge of those authoritative scriptures. और किसी को इन प्रमाणिक शास्त्रों को श्रवण करना चाहिए उन लोगों से जो प्रमाणिक हैं उस शास्त्रों को बोलने के लिए. One must hear from persons who are actually in knowledge, Prabhupada says. प्रभुपाद बताते हैं किसी को ऐसे व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित है. So there's Gyan and there's Vigyan. प्रभुपाद बताते हैं ज्ञान है और एक विज्ञान. Gyan also means knowledge. तो ज्ञान का मतलब भी ज्ञान होता है. But Vigyanam means a realized knowledge. लेकिन विज्ञान का अर्थ है अनुभव किया हुआ ज्ञान. So Jnana is theoretical knowledge. तो ज्ञान जो मौखिक स्तर पे है. Tattva Vijnanam is realized knowledge by the mercy of the Lord. तो तत्व विज्ञानम साक्षात्कार प्राप्त ज्ञान है कृष्ण की कृपा से. So Krishna says, if you can hear from me, then I'll give you the purified intelligence, mind and senses, how you can come to me. तो कृष्ण बताते हैं अगर आप मुझे श्रवण कर सकते हैं तो मैं आपको शुद्ध करूंगा, आपको शुद्ध बुद्धि दूंगा, आपके शुद्ध इंद्रियों को शुद्ध said that if you're like Arjuna, if you're that fortunate, Krishna from his lips to your ear will exactly explain to you. और प्रभु बताते हैं अगर आप अर्जुन की तरह भाग्यवान हैं तो कृष्ण सीधे सीधे अपने होठों से आपके कानों तक बात करेंगे. If not, Krishna in the form of the Shastra is also manifesting and instructing through Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. और इसके अलावा कृष्ण शास्त्र के रूप में भगवद गीता के रूप में भी आपको निर्देश दे रहे होते हैं. But that must be heard from one who understands Bhagavatam and Bhagavad Gita. लेकिन ये श्रवण करने की जरूरत है उन लोगों से जो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता जिन्होंने साक्षात्कार किया है. So one must hear from persons who are actually in knowledge. तो किसी को अवश्य श्रवण करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों से जो असल में ज्ञान के स्तर पे हैं. So whenever Prabhupada says actually in knowledge, or जब भी प्रभुपाद कहते factually हैं in knowledge, जब असल में ज्ञान में स्थित है, he's तत्व में talking ज्ञान में about स्थित है, real knowledge, तो वो असल ज्ञान की बात Means कर रहे तत्व हैं, विज्ञान. मतलब तत्व विज्ञान की बात कर रहे हैं, not theoretical knowledge. मौखिक ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं. If we're theoretically perceiving and understanding, it has also so much faulty nature, Krishna not manifesting, else. तो अगर हमारी समझ केवल मौखिक स्तर पे है तो ये पर्याप्त नहीं है हमारे खुद को आश्वस्त करने के लिए. तो हम कैसे किसी और को शुद्ध या आश्वस्त कर सकते हैं उस ज्ञान से. So what is the result of hearing from persons who are actually in knowledge? तो क्या आपको लाभ होगा जब किसी ऐसे व्यक्ति से आप श्रवण करेंगे जो असल में ज्ञान में स्थित है. Prabhupada says, as a result of this
discussion, this hearing and chanting in the association of such realized devotees, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त भक्तों के संग में श्रवण करने से one comes to the Supreme Personality of Godhead. कोई परम भगवान तक पहुंच जाता है। So either Krishna comes to you, या तो कृष्ण आपके तक आ जाएंगे, or he sends his representative, या वो अपने प्रतिनिधि को आपके पास भेजते and हैं, then manifests and speaks through his bona fide authorized representative. और फिर वो प्रकट होंगे और उस प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से आपसे बात करेंगे। Once you get these two mercies, Prabhupada says, mercy of Krishna, mercy of bona fide Guru, प्रभुपाद बताते हैं जब आपको ये दो कृपा मिलेगी, कृष्णा की कृपा और प्रमाणिक गुरु की कृपा, then the first thing one must do, Prabhupada says here, is surrender to him. तो प्रभुपाद बताते हैं जो सबसे पहला कार्य किसी को करना चाहिए वो उस गुरु को शरणागत करना चाहिए। Without intelligence and faith from Krishna and from bona fide Guru, then how you can surrender? Why will you surrender? तो बिना कृष्णा के द्वारा बुद्धि और श्रद्धा पाए बिना क्यों और कैसे आप किसी को शरणागत How करेंगे? can you do proper submissive or reception if we do not have faith and confidence and intelligence that we're hearing perfect knowledge from perfect source? कैसे आप पूर्ण तरीके से विनीत भाव से श्रवण कर सकते हैं अगर आपको पूर्ण बुद्धि श्रद्धा नहीं मिल पाया है उस व्यक्ति के अंदर? And without those two mercies and without hearing that knowledge through authoritative scripture, then Krishna says, then you're lost, you'll be lost. तो और बताते हैं अगर आप ये ज्ञान सही प्रमाणिक स्रोतों से श्रवण नहीं करते हैं कृष्णा के माध्यम से तो आप भटके रहेंगे। So Prabhupada explains that Krishna and Krishna Parampara, Guru Sadhu and Shastra, that's the only thing that should be heard. That's the only thing that's absolutely correct. तो प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण परंपरा गुरु साधु शास्त्र केवल यही चीजें हमें सुनने की जरूरत है। That's why Prabhupada in everything that he's explaining is explaining everything in a very authoritative way according to what Krishna has said, according to Guru Sadhu and Shastra. It's scientific, authoritative presentation. तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने जो भी बातें कही है पूर्ण तरीके से कृष्ण परंपरा और वैज्ञानिक तरीके से जो सत्य बातें हैं केवल वही बातें कही है। And Prabhupada said, one who's able to realize that and explain that as it is, without adding and subtracting, in an empowered, authorized way, that is Parampara. और प्रभुपाद बताते हैं जो इसको यथारूप में प्रस्तुत कर सकता है बिना कुछ इसमें जोड़े बिना कुछ इसमें घटाए वो है परंपरा। Otherwise, it's just, we're all Prabhupada's men, and then it's like you don't even understand Prabhupada or his instructions. You're disregarding the instruction. Prabhupada says, don't change anything. You're changing everything. और Right? कह रहे हैं कि मैं प्रभुपाद का व्यक्ति हूँ और प्रभुपाद को आप जानते नहीं, प्रभुपाद के निर्देशों को समझते नहीं, ना उनके निर्देशों को पालन कर रहे हैं बल्कि उसके आप विरोध में जा रहे हैं। And then you change the books. और आप किताबों को बदल रहे हैं। Then you quote half of what Prabhupada quoted out of context. और बाकी के भाग को जो उस कथन के उसको प्रजल्पा कहा जाता है। Or you'll be labeled a domestic terrorist. या फिर आपको एक घरेलू आतंकवादी का आपको ऊपर ठप्पा लगा दिया जा रहा Is this as it is? है। तो क्या ये यथारूप है? That's parampara. क्या ये परंपरा है? That's crystal clear according to what Krishna and Guru Sadhu and Shastra are speaking. And तो क्या ये शीशे की तरह साफ हो चुका है कि जो कृष्णा गुरु साधु शास्त्र And बता then you रहे ask them, where did Prabhupada ever say that? हैं और आप पूछे उनसे कि प्रभुपाद ने कहाँ कोई Where did ऐसी Srila बात Bhakti बताई है? Siddhanta Saraswati Thakur ever say that? What previous acharya anywhere has ever said that? आप बताइए कहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या कोई भी पूर्वाचार्य ने इन बातों पे जोर दिया है? I remember one old devotee in the Boston Temple, he said, if Bhaktivinoda Thakur was in ISKCON today, he would be thrown out of ISKCON. मुझे याद है बॉस्टन में एक बहुत पुराने भक्त ने ये कहा था कि अगर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी अभी इस्कॉन में रहें कमाल की बात As बताइए। acharya in disciplic succession speaks the truth, that would be considered, unacceptable. तो जो We're प्रमाणिक going to throw you out. जो प्रमाणिक आचार्य बताएंगे उसको वो अस्वीकार करके संस्था से बाहर निकाल देंगे। So all of this is this is scientific process. तो ये बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। How and where Krishna is choosing to give us intelligence. तो कैसे और कहाँ कृष्णा ये निर्णय कर रहे हैं हमें बुद्धि देने के लिए।
right? And then if you're trying to understand what Krishna says, they'll say you're not advanced enough to know what Krishna says. Just listen to us. We'll explain it to you. और जब आप ये कहते हैं मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि कृष्णा क्या बता रहे हैं, तो वो कहेंगे आप इतने उन्नत नहीं है ये समझ पाने के लिए कृष्णा क्या Don't बता try रहे to हैं. figure it out. हम आपको बताएंगे कृष्ण क्या बता रहे हैं. आप खुद पता लगाने का प्रयास मत करो. हृदय में जो सारे ज्ञान और बुद्धि के You're not स्रोत advanced enough to do that. हैं, क्योंकि आप इतने उन्नत नहीं है ये You're सब not कर पाने advanced के लिए. enough to cry to Krishna. आप इतने उन्नत नहीं है कि आप कृष्ण के लिए रो सकें. You're not advanced enough to depend on Krishna. आप इतने उन्नत नहीं है कि आप कृष्ण के ऊपर निर्भर रह And Krishna is सकें. not going to give you intelligence and faith anyway. और कृष्ण वैसे भी आपको कोई बुद्धि श्रद्धा नहीं So, देगा. and then if you make a mistake, you're going to burn in hell. और अगर आप कोई गलती कर देंगे तो आप नरक में जलेंगे. So you better just listen to what we have to say. तो बेहतर होगा आप वही सुने जो हम आपसे कह रहे हैं. You understand what I'm saying? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? So you finally get out of the brainwashing of the family and the school system. तो अंत में किस तरह से आप अपने परिवार और स्कूल में जिस तरह से ब्रेन वॉशिंग होती है उससे आप बाहर निकले. Then you finally practically fall into the spiritual institution और फिर अंत में आप इसी आध्यात्मिक संस्था में पहुंच गए for relief. थोड़ी राहत पाने के लिए. And then you found out that you just like joined another militant brainwashing operation. फिर आपको पता चला आपने एक और सैनिक ब्रेन वॉशिंग ऑपरेशन से आप जुड़ चुके हैं. And all the mind police are walking around and you don't know who's part of the mind police, you know. और जो सारे माइंड पुलिस जो है आसपास घूम रहे हैं आपको पता नहीं है जो है कौन-कौन वो लोग हैं जो इस पुलिस It's का like हिस्सा in the हैं. Communist Party, right? Someone in the neighborhood, in the housing unit, somebody was a communist. तो जैसे कम्युनिस्ट सरकार में कि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक खुफिया सदस्य है Nobody really knows like who's who, और किसी को नहीं पता कि कौन क्या है. right? And if you have to speak about something, you have to go deep into the forest. और अगर आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो आपको बहुत जंगल की Even when गहराई the में जाना होगा. devotees there, they wanted to become devotees. They had to go like deep into the forest to have a festival. तो जो हमारे भक्त वहाँ जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे थे उनको जो जंगल के अंदर जाना पड़ा भक्ति का प्रयास करने के लिए. Janmashtami or Radhastami. जन्माष्टमी या राधाष्टमी हमें उत्सव मनाने Because के लिए. no religion is allowed. क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह के धर्म का अभ्यास करने की It's अनुमति based नहीं on है. atheism. क्योंकि वो नास्तिकतावाद पे आधारित है. You only worship the state. वहाँ केवल राज्य की पूजा So की you जाती है. finally break out of the communistic totalitarian regime of worshiping the state, and then you come to ISKCON. तो किसी तरह से आप जो है इस कम्युनिस्ट साम्यवादी राज्य से बाहर निकलकर ब्रेन वॉशिंग से अब आप इस And then you get another controlling atheistic totalitarian regime. और फिर वहाँ एक और नास्तिकतावाद और लोगों को नियंत्रण करने वाली व्यवस्था है. And there are lieutenants in the counseling system. और उनके जो लेफ्टिनेंट्स हैं जो इस काउंसलिंग व्यवस्था के भाग हैं. Is it? ऐसा है या नहीं? Does it sound familiar? क्या ये सुनने में Does it sound like परिचित लगता है? an affair of the heart and the soul? Is Krishna inspiring you in that, or are you just afraid to get shot? तो हाँ आपको कृष्णा भीतर से प्रेरणा दे रहे हैं सारी चीजें अच्छी तरीके से हो रहे हैं या फिर बस भय के आधार पे कर रहे हैं कि आपको गोली ना मार दी जाए. What? In the ashram in London. What? In the ashram in London. Another war story. तो बता रहे हैं जो लंदन के हमारे आश्रम में तो गुरु बता रहे हैं ये एक और अब युद्ध की कहानी है. It's like in the Soviet times, everyone has like war stories, जैसे सोवियत के समय में सभी के अपने अपने एक युद्ध की कहानी है. Right. So he has his totalitarian war story. तो इनका भी एक ऐसे ही युद्ध की कहानी है इनके पास भी. Right. What didn't you like? आपको क्या चीजें पसंद नहीं आई थी? Huh? So many things. So give us one. और बहुत सारी चीजें मुझे वहाँ पसंद नहीं आई तो महाराज We have एक new हमें people बताइए. here. They're gonna be like, what are they talking about? हमारे नए लोग यहाँ आए हैं वो सोच रहे हैं ये लोग क्या बातें कर रहे हैं. Is this a spiritual institution or is it a communist, totalitarian, Nazi, mind police संस्था या साम्यवादी institution? नाज़ी व्यवस्था है यहाँ पे और आध्यात्मिक नहीं है. I just found out. We're all friends. We're discussing many topics तो here. हम सभी दोस्त हैं और हम सभी अलग-अलग विषयों के ऊपर बात करते हैं. Don't worry. चिंता मत कीजिए.
He's controlling all the microphones. सारे माइक्रोफोन को भी अपने He's नियंत्रण like से चला रहे हैं। short-circuiting everybody's तो ये live feed to the microphone. ये शॉर्ट सर्किट कर देते Sabotaging हैं। सभी लोग जो भी माइक्रोफोन बोलना चाहते हो माइक्रोफोन शॉर्ट सर्किट कर देते Nazi. Seriously, he's a Nazi. हैं। वो गंभीर से बता रहा हूँ ये नाज़ी है। I'm trying to break him out of that brainwashing. और मैं उनको उस ब्रेन वॉशिंग से बाहर It's very निकालने deep. का It's प्रयास कर very रहा deep हूँ। rooted though. बहुत गहराई में है उनके अंदर We're still working on that one. और हम अभी भी इनके ऊपर काम कर रहे हैं। I just found out that all the brahmacharis staying in the You're ashram. scaring me now. तो बता रहे सारे ब्रह्मचारी के आश्रम में जो रहते थे I'm getting ready for the bad news, you know. मुझे डर लग रहा है कौन सी बुरी खबर सुनाने वाला है ये। So what's the bad news? तो क्या बुरी खबर थी? All the simple brahmacharis who just want to surrender and serve Krishna तो सारे सरल ब्रह्मचारी कृष्ण को शरणागत और उनकी सेवा करना चाहते हैं। are now, अब They have to see a psychologist. they have to what? To see a psychologist. तो बता रहे हैं वो जो है They have to go to a psychologist बता रहे वो सभी जो है मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। after they have selected their gurus? अपने गुरुओं को चुनने के बाद ऐसा हाल है उनका। Yeah. After they selected these gurus, now they're saying, hey, listen, you need a psychologist. तो ऐसे गुरुओं को चुनने के बाद उनको कहा जा रहा है कि अब देखो आपको मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत है। The fact that you selected me as a guru means, in my opinion, you need a psychologist. कि बात यही है कि अगर आपने मुझे गुरु स्वीकार किया इसके बाद आपको मनोचिकित्सक के पास जाने की Because you जरूरत have lost your mind. है क्योंकि आपका दिमाग If you're accepting me as your guru, that's a proof you're crazy. मुझे अपना गुरु स्वीकार किया यही साबित करता है And कि I'm आप just पागल doing हैं। you a favor, man. और मैं आप पे बस एक एहसान कर I रहा may हूँ। get it right, I might get it wrong, you तो मैं हो know. सकता है सही भी कर रहा हूँ या गलत भी कर सकता हूँ। Let's just make sure the psychologist will give it a rubber stamp on that, you know. और बस ये सुनिश्चित कीजिए कि वो मनोचिकित्सक उसके ऊपर एक ठप्पा लगा दें। But who do the ISKCON psychologists, who's their psychologist? और इस्कॉन के जो मनोचिकित्सक हैं उनके मनोचिकित्सक कौन हैं? Did you ever notice who becomes a psychologist? क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि It's like मनोचिकित्सक कौन someone बनते who's हैं? battling with their crazy mind their whole life, and they're like, I'm so busy doing this, I might as well make a living out of it, you know? तो जो लोग खुद पूरी तरह जीवन में व्यस्त रहते हैं अपने खुद को मन को नियंत्रण में लाने के लिए बाद में वही मनोचिकित्सक बनते हैं कि बाकी लोगों की भी मैं भी इसी तरह मदद करूँ। Like at 40, 45 years old, now you're going to become a psychologist, you know? तो 40 साल 45 साल होने के बाद वो कहते हैं अब मैं मनोचिकित्सक बनना चाहता This is madness. हूँ। ये सब पागलपन है। Where any acharya in disciplic succession starts off saying, if कहाँ पे कोई भी वैष्णव आचार्य ने कभी भी आपने देखा हो मनोचिकित्सक के पास जाने की सलाह देते हैं। ये सब पागलपन है। right, Krishna, he is the ultimate psychologist. तो कृष्ण ही अंतिम मनोचिकित्सक है। Because it says, if you surrender to Krishna, Rishikesh, he's the master of your mind and your senses. कहते हैं अगर आप कृष्ण को शरणागत करते हैं तो वो आपके मन और इंद्रिय के स्वामी हैं। And Krishna can do and undo anything. He's और supreme कृष्ण- mystic, Yogeshwar. और कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं वो योगेश्वर हैं। He can purify the three worlds. Is your mind that crazy? तो वो पूरे He's तीन purified the जगत three worlds, but he's having trouble with your mind? तो वो पूरे तीन लोगों को शुद्ध कर सकते हैं तो आपके मन इतना पागल है कि वो आपके मन को शुद्ध नहीं कर सकते। You understand my point? आप मेरी बात So, समझ पाए? I asked the psychologist, I said, isn't the psychologist, you're supposed to, how do you deal with people's disturbed minds? Isn't that what psychologist is? तो मैंने उनको पूछा कि मनोचिकित्सक का कार्य होता है कि जो दूसरे लोग जो अपने मन से परेशान हैं उनको मदद की जाए। Isn't that why everyone goes to psychologists, psychiatrists? Because they have such a crazy, disturbed mind, they have no peace, no happiness. Right? तो इसीलिए लोग मनोचिकित्सक के पास जाते हैं क्योंकि उनका मन शांत नहीं होता, कोई शांति नहीं मिलती, सुख नहीं होता उनको। And they spend, you know, billions of dollar industry of psychologists, psychiatrists. और करोड़ों रुपयों का कारोबार है ये मनोचिकित्सक। Why do people do yoga? Because the stupid mind, they're trying to somehow get some peace and happiness in their mind, तो their लोग life. योग साधना करने का अभ्यास क्यों करते हैं? क्योंकि मन को इसी तरह नियंत्रण करके जीवन को शांत और सुखमय बनाया जा सके। But Krishna says, if you surrender to me, I'll purify and control your mind and senses
for you. लेकिन कृष्ण बताते हैं अगर आप मुझे शरणागत करेंगे तो मैं आपके मन और इंद्रिय को नियंत्रण करूंगा आपको। We've already tried everything else, it doesn't work. और हम पहले ही बहुत सारी चीजें प्रयास कर चुके हैं और ये काम नहीं आई। So what do you have to lose? तो आपके पास क्या है खोने के लिए? So try to surrender to Krishna, try to surrender to Rishikesh and see if Krishna by his causeless mercy will purify and control your mad mind. तो कृष्णा को ऋषिकेश को शरणागत करने का प्रयास कीजिए और देखिए कृष्णा अपनी कृपा से आपके पागल मन को शुद्ध और नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं। And I told this ISKCON psychologist that if you can't get them to surrender to Rishikesh, the master of the mind and senses, how are you going to help them to purify and control their minds? और मैंने ISKCON के मनोचिकित्सक को पूछा अगर आप लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं कि कैसे वो कृष्णा को ऋषिकेश को जाके शरणागत करें जो उनके मन और इंद्रियों को उनके लिए नियंत्रण शुद्ध करेंगे, कैसे आप किसी की मदद कर सकते हैं? And if you're, and I said, and if you are you surrendered to Rishikesh? Is he purifying, controlling your mind and senses? और मैंने उनको पूछा क्या आपने ऋषिकेश को शरणागत किया है? क्या ऋषिकेश आपके मन इंद्रिय को शुद्ध कर रहे हैं? So if you can't even get Krishna to do that for you, how are you going to get Krishna to do that for somebody else? तो अगर आप ये कृष्णा से नहीं करवा रहे हैं खुद के लिए तो किसी और के लिए कैसे आप करवा सकते हैं? Can't even purify yourself. आप खुद को भी शुद्ध नहीं बना सकते। That's why they're saying go to a psychologist. Maybe something else will work. इसलिए वो कहते हैं आप मनोचिकित्सक के पास जाइए, हो सकता है कुछ और चीज काम आएगा। So these guys are doing yoga, hatha yoga, and they're doing pranayam. They're going to psychologists. तो ये जो लोग हैं ये योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मनोचिकित्सक के पास जा रहे हैं। There's no time for Mangal Arti. मंगल आरती में जाने के लिए समय नहीं। We're busy. हम बहुत व्यस्त हैं। We're dealing with our minds. हम अपने मन को We're ठीक trying करने to में get लगे हैं। healthy. हम स्वस्थ होने का प्रयास कर रहे हैं मानसिक रूप से। Where does Guru Sadhu Shastra say to do this? कहाँ पे गुरु साधु शास्त्र ने ऐसा करने की सलाह But दी? because people don't read and understand Srila Prabhupada's books and teachings, that's why they can easily be misled. और लोग श्रील प्रभुपाद की किताबों को ना तो पढ़ रहे हैं ना समझ रहे हैं, इसलिए बहुत ही आसानी से उनको गलत दिशा में ले जाया जा सकता है। And that's what Prabhupada was afraid of, that this is a dangerous world. और इसलिए प्रभुपाद को इसी बात का भय था कि ये जगह बहुत ही खतरनाक This है। is not child's play. This is life and death risking here. तो ये बच्चों का खेल नहीं है, यह जन्म और मृत्यु का प्रश्न है। So if we're not sheltered and protected in the truth, in the absolute truth, in Krishna Mahaprabhu's parampara, disciplic succession, then that means that we have no shelter and protection. तो अगर हमने परम सत्य का आश्रय नहीं लिया है कृष्ण महाप्रभु और उनके परंपरा में, तो वहाँ इसका मतलब हमारे पास कोई आश्रय रक्षण नहीं है। The Maya can send in so many varieties of so-called devotees and philosophers and religionists and speculators and intellectuals and scholars and to just bamboozle you. तो माया Mayavadis. भ्रमित कर देंगे। These same so-called gurus writing autobiographies of themselves. तो ये जो नाम मात्र गुरु ये खुद का ही जीवनी लिख रहे हैं। And then associating with the greatest offenders to the Lord, aparadis, these Mayavadis and Babajis, these are their friends. और वो भगवान के सबसे बड़े अपराधी मायावादी और बाबा जी लोगों को जाकर संग कर रहे हैं। And then when you're messed up trying to understand how that's all absolute, they say, well, you just need a psychologist. और जब आप अपने आप को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर लेते हैं इस तरह से अपने आप को समझने के प्रयास में, फिर उसके बाद कहते हैं आपको मनोचिकित्सक की जरूरत है। ये It's very unfortunate because people are coming to Prabhupada's, after reading Prabhupada's books and teachings, coming to the institution, and then they're being misled like this. तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, लोग श्रील प्रभुपाद की किताबों को पढ़कर मंदिर में आ रहे हैं, फिर उनको गलत दिशा में बढ़ाया जा रहा है। That's why we don't leave. और इसीलिए हम जाते नहीं हैं। For this very reason. इस एक कारण की वजह There से needs to be another alternative. एक दूसरा विकल्प मौजूद रहना चाहिए। To all of this madness and speculation and irresponsibility. ये सारे पागलपन, मनोधर्म और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से। Is it true? क्या ये सत्य है? So this is sad. To me, this is sad. You think, when they do all these things, I said, did they ever stop to think that if you went to Srila Prabhupada and you asked Prabhupada, we're thinking to do this, what do you think Srila Prabhupada would say to you? और कभी वो ये सोचने के लिए Would रुकते he नहीं हैं। actually accept what you're saying? Do you really believe that?
और कभी वो ये सोचने के लिए रुकते तक नहीं है। अगर वो ये बात जाकर शिला प्रभुपाद को कहें कि शिला प्रभुपाद हम ऐसी चीजें करने का सोच रहे हैं, क्या लगता है कि शिला प्रभुपाद उनको नाम मात्र की So परवाह you नहीं don't है। care, you don't have books and purports, and you're going to understand everything and explain everything in like a precise, scientific, pure way. How is it possible? तो आपको कोई परवाह नहीं है कौन सी चीज़ आपको गुरु को आनंद सुख दे सकती है और कौन चीज़ उनको सुख नहीं दे सकती है, और आप सोच रहे हैं आप उनके किताबों को, उनके अनुवादों को, तात्पर्य को पढ़ के शुद्ध तरीके से लोगों को ये बात बता पाएंगे। But unfortunately, we have what. ऐसा नहीं करना चाहिए, और उस प्रभुपाद ने कहा था हमें इसके उल्टा। And then I told the psychologist that Prabhupada, will never. He'll say, "Don't do that." और मैंने उस मनोचिकित्सक को कहा कि प्रभुपाद ने ये कहा है ये चीजें नहीं करने के And लिए। they said, "Well, my guru said I can do it." और फिर उन्होंने कहा लेकिन मेरे गुरु ने कहा है मैं ये कर सकता So हूँ। that's parampara. तो क्या ये परंपरा है? That's as it is. क्या ये यथा रूप में है? Prabhupada said, "Don't change anything." प्रभुपाद ने कहा है कुछ भी चीज बदलने का प्रयास मत कीजिए। But this is the problem. They think they're very smart. लेकिन ये समस्या है, वो सोचते हैं वो बहुत बुद्धिमान है, Right? ये है इनको फिर से ताज़ा तरीके से प्रस्तुत करने की जरूरत है। Okay, then present as it is in a way that people will appreciate it in the modern day. That's no problem. तो ठीक है, आप यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए इस तरीके से कि वर्तमान में लोग उसको स्वीकार कर पाएं। But not that you change the Siddhanta. लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिद्धांत को ही बदल दें। The Siddhanta, Prabhupada says, is one, प्रभुपाद कहते हैं सिद्धांत हमेशा एक है, not even two. यहाँ तक कि दो भी नहीं है। So if everyone is really following Bhakti Siddhanta, they should all be saying the same thing. They should all be agreeing on the same philosophical conclusions of our philosophy. अगर सभी लोग एक ही भक्ति सिद्धांत का पालन कर रहे हैं तो सभी का निष्कर्ष एक ही होना चाहिए चर्चा। And then on the other side, then you have everyone saying, okay, then just be a gopi in separation, just do Raganuga Bhakti. और दूसरी तरफ में वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि बस विरह के भाव में गोपी बनिए, रागानुगा भक्ति कीजिए। They're going to psychologists, you guys just practice Raganuga Bhakti. कुछ लोग मनोचिकित्सक के पास आइए, आप लोग रागानुगा भक्ति But it's कीजिए। the same deviation. पर दोनों ही विमुख हो रहे हैं। They're avoiding the system, the science, so are you. तो वो भी व्यवस्था विज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और आप भी Still वही the कर रहे हैं। material manipulation and concoction. अभी भी भौतिक तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा It's रहा not है। authorized, it's not तरीके से। scientific, तो ये प्रमाणिक नहीं है, वैज्ञानिक तरीका it's नहीं not है। according to Guru Sadhu and Shastra. तो ये गुरु साधु शास्त्र के आधार पे नहीं है। So it's also asara, it's also unacceptable. तो ये आसार है जिसको स्वीकार नहीं किया जा It's सकता। also, useless, powerless. तो ये बेकार है, शक्तिहीन है। So it's very dangerous. तो ये बहुत ही So खतरनाक if you're just like some simple person and you're just trying to understand what's going on and I used to be an atheist, now I'm trying to understand who is God, then you have to face all of this type of subtle types of deviations and manipulations. This is a battlefield. तो पहले आप एक सरल थे कि सरल तरीके से आप नास्तिक थे, बाद में आप यहाँ आप आए, अब धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे ऐसे सूक्ष्म विमुक्ताएं हैं और ये एक तरह से पूरा युद्ध है आपको जो इसमें आपको गुजरना पड़ेगा। Very dangerous place. तो बहुत ही खतरनाक जगह है। So we have to be armed with knowledge, with हमें- realization, ज्ञान से खुद को सशक्त बनाना होगा, साक्षात्कार से। and that shelter and protection comes in basing your foundation of faith in Krishna, Guru, Sadhu, and Shastra. और ये आपको प्राप्त किया जा सकता है साक्षात्कार अगर आप अपनी श्रद्धा गुरु साधु शास्त्र में डालें, Then you'll be unshakable. और तब आपको कोई हिला नहीं सकता, Then you can be fixed. Nobody can defeat you. और तब आप स्थिर हो सकते हैं, कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। Otherwise, we're a very vulnerable condition. वरना हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। Just lost on a mental, speculative, emotional, external platform. हम भटके हुए पूरी तरह से अपनी भावनाओं में और मानसिक मनोधर्म के स्तर पे। So if we don't hear tattva from tattvavid guru, we cannot be established in the absolute truth. You cannot be unshakable. अगर आप तत्वविद गुरु से श्रवण नहीं करते हैं तो आप
स्थिर कभी नहीं हो सकते हैं। You'll easily be persuaded by all of these different seemingly convincing philosophies and personalities and charisma and entourages and money and power and all of this external kind of impetus. तो बहुत ही आसानी से कोई भी बाहरी चीज़ आपको प्रभावित कर देगी, बाहरी चमक दमक अंतराज, इससे आप बहुत आसानी से भटक जाएंगे। And that's the test. और ये परीक्षा है। Quite frankly, अगर मैं कहूँ तो those are creations. तो ये सारी परीक्षा है कि आप खुद को बचा पाएंगे इतने स्थूल या सूक्ष्म तरीके के विमुक्ताओं से। And without the mercy of Krishna, mercy of his representative, bona fide guru and parampara, there's no way to get shelter and protection and intelligence and guidance to go through that minefield and to avoid all of these different types of distractions and impediments on the path. और बिना कृष्ण परंपरा की कृपा पाए बिना आपको वो बुद्धि शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। कैसे आप इतने सारे विमुक्ताओं से जो माइंस की तरह हैं इनसे आप बचकर आगे निकल So सकते bona fide guru means heavy. तो प्रमाणिक गुरु का मतलब होता है Means his knowledge, his realization is heavy, it's fixed. यानी कि उनका ज्ञान, उनका साक्षात्कार बहुत भारी स्थिर You होता है। cannot budge him, you cannot shake him. आप उनको हिला नहीं सकते। Right, that's because Krishna himself and Krishna's devotee Shastra has completely PhD scholars in the world. प्रभुपाद ने कहा था श्रीमद् भागवत गीता के 15 श्लोक से मैं दुनिया के सबसे बड़े विद्वान PhD स्कॉलर को So हरा you सकता हूँ। Prabhupada said, if you fully realize by mercy of Guru Krishna, even 15 shlokas, nobody can defeat you. प्रभुपाद ने कहा था अगर आप पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त करते हैं कृष्ण की कृपा से तो केवल 15 श्लोकों से आप किसी को भी हरा सकते हैं। We need guru like that. हमें वैसे गुरु की जरूरत है। We're already shaky. We're already trying to get some balance and some fixture in what is absolute truth. We don't need the guru to also be like, well, I think it's like this, तो हम पहले से Yeah, and if it doesn't work, we'll go to a psychologist together. We'll go for group therapy. तो हम खुद से ही पहले से ही अस्थिर स्थिति में हमारा खुद का ही स्थान हमें पता नहीं परम सत्य के आधार पे, तो हमें ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है जिसे खुद भी नहीं पता, वो भी मनोधर्म कर रहा है और अंत में हम सभी को मनोचिकित्सक के पास जाना So पड़ेगा। instead of depending on Krishna, Guru Sadhu Shastra, we'll depend on the materialistic ladies and no offense, but all the ISKCON psychologists, most of them are ladies. तो गुरु साधु शास्त्र के ऊपर निर्भर होने के बजाय हमें इस महिलाओं के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है जो मनोचिकित्सक के रूप में कार्य कर रही हैं। So you get the brahmacharis, right, going to the lady psychologist. So that ought to help them in their brahmachari life, huh? तो अभी जो है ब्रह्मचारी है जो महिला मनोचिकित्सक के पास जा रहे हैं कुछ मदद लेने के लिए, ये उनको मदद करेगा ब्रह्मचारी बनने में। Yes, Prabhu, you have to get in touch with your emotions. हाँ प्रभु, आपको अपनी भावनाओं से खुद को जोड़ने की जरूरत है। Your feelings. आपके अनुभव, आपके अनुभूति के साथ। Yeah, that ought to help the brahmacharya, huh? ये आपके ब्रह्मचर्य को मदद करेगा। No offense. बुरा मत मानिएगा। Yeah, you need to be more sentimental. You're too rigid brahmachari, आपको थोड़ा और भावुक होने की जरूरत है। आप बहुत ज़्यादा सख्त ब्रह्मचारी बनो। You're too fanatical. आप कुछ ज़्यादा ही Just let go, आप किसकी तरफ देख रहे हैं? Slap. Guy needs a slap. इस व्यक्ति को I'll give you a थप्पड़ की जरूरत psychologist, man. है। मैं आपको एक मनोचिकित्सक के पास भेजूंगा। Right? I'll give you a psychologist. मैं You एक ever see मनोचिकित्सक sometimes these people are crazy and somebody smacks them in the face, right? And then they're just like, oh my God, thank you, man. What was I thinking, कभी-कभी हम देखेंगे किसी पागल आदमी को, उसको जब थप्पड़ लगता है तो वो जाग जाता है। अरे मैं अच्छा हुआ। It happens, right? Someone gets emotional and you get like a little slap and you're like, oh, wow, my God, what was I thinking about? जैसे कोई भावुक हो रहा होता है तो उसको थप्पड़ लगता है तो उसको वापस अपनी सही भावनाओं में आ जाता है कि मैं क्या सोचने लगा। And then in the forum they'll say, Maharaj is saying, instead of going to ISKCON psychologist, come to him for a slap. फोरम में ये खबर भेजी जाएगी कि महाराज कह रहे हैं मनोचिकित्सक के पास जाने के बजाय मेरे पास आइए, महाराज आपको थप्पड़ मारेंगे। Right, and his slap is much more effective than these lady psychologists, in ISKCON. और उनका थप्पड़ जो है ये ISKCON के महिला मनोचिकित्सक से ज़्यादा शक्तिशाली है। Even he uses his danda. I saw him. यहाँ तक कि वो अपना डंडा भी इस्तेमाल करते हैं लोगों के सर पे मारने, लोगों को मारने के लिए। Outrageous. ये बहुत ही खतरनाक है।
outrageous behavior. बहुत ही खतरनाक व्यवहार है उनका। So all this is going on. It's supposed to be simple. तो ये सब कुछ चल रहा है, ये बहुत सरल होना Right? चाहिए। Life is already complicated. जीवन पहले ही बहुत जटिल है। Right? You're supposed to be like coming to a place which purifies and simplifies your brain, your mind, your senses, your life. Not that you go join the institution, now it's more chaos, more confusion, more disturbance. ऐसे जगह में आने की Who जरूरत है। needs this aggravation, you know? ऐसे जगह में आने की जरूरत है जहाँ जीवन और शुद्ध, सरल और आसान बनने लगे, शांत बनने लगे। और इसकी वजह ये नहीं कि जीवन में और उथल-पुथल ज्यादा होने लगे जब आप संस्था से जुड़ रहे हो। कौन ऐसे परेशानी चाहता है? Then you leave the institution, you need to go to psychologists for post-traumatic stress disorder. You know? जब आप संस्था से बाहर निकलते हैं तो आपको उस सदमे से बाहर निकलने के लिए Prabhu, किसी what ठीक happened? करने You के लिए know? जाना पड़ता है। I was क्या हुआ? serving in Afghanistan, you know. मैं अफगानिस्तान में सेवा कर रहा I was in Vietnam, you know. हूँ। कोई कहता है कहेगा मैं वियतनाम में था। Yeah. I was in the London Temple, you know. मैं लंदन के मंदिर में था। I was trying to like put bombs together, you know. मैं जो है बमों को Counselor जोड़ने का system, प्रयास कर रहा था इस तरह काउंसलिंग व्यवस्था में। I don't know what to say, you know. I'm just being honest with you, you know. मुझे पता नहीं मैं क्या कहूँ, मैं अपने आपके साथ ईमानदारी बरतता That's हूँ। why I say, you know, if you just speak philosophy and it's just like up here somewhere, and it's not the reality of what we're going through, तो then इसलिए it's कहते हैं not really effective, you know, kind of use of that philosophy. तो ऐसा अगर आप सैद्धांतिक चर्चा कर रहे हैं लेकिन वास्तविक जीवन में आपका उसके साथ कोई संपर्क नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो ये सिद्धांत काम के नहीं है। Everybody needs an ideology, right? Everyone needs a philosophy. तो सभी Everybody को looking for a leader, isn't it? तो सभी लोगों को एक जीवन में विचारधारा की जरूरत है, कुछ सिद्धांत को जानने की जरूरत है या कोई एक नेता को ढूंढने का प्रयास It's करना a है जीवन human में। nature. तो ये एक We मनुष्य need का to be स्वभाव है। guided. We हमें want to be मार्गदर्शन पाने की guided. जरूरत है। We want the good information, good leadership, good goal, worthy goal, and right information and opportunity, and then you'll feel happy. Then you'll feel secure and motivated. तो हमें अच्छी जानकारी की जरूरत है, अच्छे नेता की जरूरत है, अच्छे लक्ष्यों की जरूरत है, अच्छी प्रक्रिया को जानने की जरूरत है, तब आप उत्साहित महसूस करेंगे और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। Otherwise, we'll be just like, what's the use? You know, it's all useless. It's all. क्या करें, सब I बेकार don't know है। what the hell's going on. मुझे पता नहीं क्या हो I रहा don't है, know who's who. मुझे पता नहीं कौन I क्या don't है, know what's true, what isn't. मुझे पता नहीं क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है। How can we live like that? कैसे हम इस तरह से जीवन चला सकते हैं? So we have to let Krishna convince us. तो हमें कृष्णा को अनुमति देनी होगी, हमें आश्वस्त We're करनी trying to figure all these things out on our own. होगी। तो हम खुद से ही इन सारी चीजों को पता लगाने का प्रयास कर रहे Well, हैं। it sounds alright. He looks alright. It's सुनने में ठीक लग रहा है, a देखने में ठीक लग reasonable रहा है, argument. तो और सही तर्क दे रहा है। We're just like we're taking like the least common denominator and saying, okay, that's the best of at least what else is available. We're coming to that's how we're accepting anything. तो हम देख रहे हैं It's कि all useless, but it's like the best of the useless. तो हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे कम जो सीमा तक कोई कैसे पहुंच पा रहा है, हम वो उसको चुनने का प्रयास कर रहे हैं। Yeah, I know it's useless, but it's like the best of the useless. तो हम कह रहे हैं कि हाँ मैंने जो चुना ये बेकार है, That's लेकिन sad. सारे बेकारों में सबसे श्रेष्ठ है, ये बहुत बुरा Isn't है। it? You're accepting, you know it's useless, and you're saying, well, it's the best of the useless that I've heard up to this point. तो आपको पता है आप किसी बेकार चीज को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सारे बेकारों में ये सबसे अच्छा वाला बेकार Wow, that's really motivating, huh? है। ये आपको बहुत प्रेरित करेगा। Yeah, I'm motivated to get the best of the useless, you know? मैं बहुत प्रेरित हूँ कि मुझे सबसे बेकार में से सबसे अच्छा वाला बेकार मिला है। So you have like a little bit more, you know, Rajagun to pull off that one, you know? तो थोड़ा सा आपको रजोगुण मिल पा रहा है उससे बाहर निकलने के लिए, Otherwise you just hide out in Tamagun, you know? वरना आप केवल तमोगुण में छुपे रहेंगे। And then they're like, you know, do you want to come out of Tamagun and go into Rajagun? You're like, for what, you know? जब वो पूछा जाएगा कि आप तमोगुण से बाहर निकलना चाहते हैं, रजोगुण में आने के, तो कहते हैं किस लिए आऊँगा? It's like a killer of your energy and your inspiration, you know? You're like, you know, I don't even want to expend
any Rajagun right now, you know. तो आपकी पूरी प्रेरणा पूरी तरह से मर चुकी है कि मैं जो अपने आप शक्ति को रजोगुण तक में भी लेकर नहीं आना चाहता। It's like a bad investment, you know what I mean? ये बहुत बुरा I got a निवेश है। little Rajagun left, you know what I mean? It's like थोड़ा सा रजोगुण I बस don't want बाकी to है। waste it right now, you know. और उस रजोगुण को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। It's like just enough oxygen to make you survive, you know. It's like, okay, I'll just use that like at the last second, you know. तो जैसे आखिरी ऑक्सीजन आपके पास बचा है, आप कह रहे हैं जब आखिरी सेकंड होगा तब मैं उसको बचे हुए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करूंगा। Those are our choices. तो क्या ये हमारे सामने विकल्प हैं? Really? असल में That's what we're supposed to leave our families for that? तो हम अपने परिवार को उसके आधार पे छोड़ सकते That's हैं। the higher taste? क्या ये है ऊंचा स्वाद? Right? Well, and then they're like, well, it's 51 to 49. It's still higher, you know. और फिर वो कह रहे हैं कि 100 में 51 है, 49 से थोड़ा ज़्यादा है। And it's like, well, but some days it's 48 and the other side's, you know, 52, you know. और कभी-कभी ये कहते हैं कि एक तरफ जो है 48 है, दूसरी तरफ कम से कम 52 So है। let's get an aggregate of that, like over a period of time, and let's see what is the higher taste here, you know. Right now, you guys are running in the negative, man. तो समय के साथ हम देखेंगे कि जो एवरेज औसत उसका क्या है, और लेकिन वर्तमान में आप लोग जो है अभी नकारात्मक में जा रहे हैं। Krishna says if you get a higher taste, you can let go of the lower taste. Right? कृष्ण बताते हैं अगर आपको ऊंचा स्वाद मिलेगा तब आप निम्न स्वाद को त्याग कर सकते हैं। So does that mean like in that moment it's 51-49? इसका मतलब ये है कि इस क्षण में ये And then you just catch it on the upswing and then pull out of the material life? Is that how that works? और आप जो है उसके माध्यम से इस भौतिक जीवन से बाहर निकलना It's चाहते like the हैं। stock market, you know, it's like it's going dipping down and going up, you know. It's like when it just goes up, that's when you sell. That's when you get out of that, right? तो जैसे स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो जब थोड़ा सा ऊपर उठने लगता है वो अब सोचते हैं ये सही समय है मेरा यहाँ से बाहर निकलने का, अभी ये गिर नहीं रहा। These are the financial wizards here, man. I'm just speculating. Some analogy to make them happy, you know. ये लोग असल में अर्थव्यवस्था वाले लोग हैं। मैं ये उदाहरण इस्तेमाल कर रहा हूँ बस इनको थोड़ा सुखी करने के लिए। So, any other points, कोई questions? अन्य प्रश्न या कोई बात? Your stories are sad, man. कहानी बहुत दर्द भरी है। It's like talking about the degradation of society, you know. It's like we're already depressed, you know what I mean? जैसे बताया जा रहा है कि समाज का कैसे पतन हुआ तो हम उससे और पहले ही बहुत हताश हैं। We're already sad, and he's like, his stories are making us more sad, you know. हम पहले ही बहुत उदास हैं और इनकी कहानी हमें और उदास बना रही It's है। like, what's the use, you know? It's like तो क्या करें, कोई blow your head off, you know. अपना सर उड़ा लो, Take another seminar, you know. एक और सेमिनार लीजिए अपना। You know, and then you got to try to somehow convince your brain cells to like work again. Like it's worth it, you know. और अपने दिमाग के कोशिकाओं को फिर से जोड़ने का प्रयास करो और ये सोचने का प्रयास करो कि ये अभी भी काम करेगा। You know, you can engage again, you know. आप वापस से इसको लगा सकते हैं काम में। It's worth thinking about it. ये सोचने के लायक है। All right. ठीक है। I have a question. Uh-oh. I gotta get my shastra. I gotta get my weapon. He has a question. I gotta get my weapon. ये कह रहे हैं मुझे अपना शस्त्र तैयार कर लेना चाहिए। Okay, इनका एक let me प्रश्न। hear it. तो चलिए हम सुनते हैं। Dharma, you all right? हम आप ठीक हैं? Your ears all right today? आपके कान आज ठीक है? ठीक है। You're gonna get cookie at the end if you're a good boy, all right? अंत में आपको एक कुकी मिलेगा। Maybe आप अच्छे even लड़के two. हैं। हो सकता है 2 भी मिल सकता है। You gotta make it to the end now. लेकिन अंत तक बने रहना होगा। And he's like, I hope this is not another 4-hour class. मुझे उम्मीद है और एक 4 घंटे वाली क्लास नहीं होने वाली आज। So in 13th chapter of Bhagavad Gita, means I need little more explanation on this sentence from you. Really? Did you ask Krishna? वो पूछ रहे हैं कि 13वें अध्याय के भगवद गीता में एक वाक्य है उसके बारे में मुझे और ज़्यादा स्पष्टीकरण चाहिए। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि आपने कृष्णा से प्रार्थना की है इसके लिए। So when you don't understand something, you have to ask Krishna. Krishna, how do I understand that? तो अगर आप कुछ नहीं समझ पाते हैं तो आपको कृष्णा से पूछने की ज़रूरत है, कृष्णा कैसे मैं इस बात को समझूं। Now it's up to Krishna to answer your question. अब ये कृष्णा के ऊपर है कि कैसे He आपके can प्रश्न का answer उत्तर it from देंगे। Paramatma Super Soul.
तो वो परमात्मा से आपको He उत्तर could दे सकते answer हैं, it through the Guru, Sadhu Guru Vaishnava, तो या साधु गुरु वैष्णव के माध्यम से आपको उत्तर or he देंगे, could answer it directly from the Shastra. या फिर सीधे सीधे शास्त्र के माध्यम से ही आपको उत्तर Did you do all of that देंगे। first? आपने ये सब पहले कर लिया। Oh, so if I give you an answer, how will you know if it's coming from Krishna? तो जब मैं आपको उत्तर दूंगा, आपको कैसे समझ में आएगा ये उत्तर कृष्णा से आ रहा है या नहीं? How will you connect that answer to Krishna? कैसे आप उस उत्तर को कृष्णा से जोड़ पाएंगे? Otherwise, you'll just say, "Well, that's his opinion." वरना आप ये मानेंगे कि ये बस उनका विचार था। So let's see. Let's see what happens. चलिए देखते हैं। In 13th chapter 8 to 12 shloka, in 13th chapter of Bhagavad Gita, Yeah. 8 to 12 shlokas, Prabhupada is writing about simplicity. Simplicity. Simplicity means that without diplomacy, one should be so straightforward that he can disclose the real truth even to an enemy. He can disclose what? The real truth. He can disclose the real truth even to an enemy. But the pure Vaishnava doesn't have any enemies. तो प्रभु बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12 नंबर श्लोकों में ये बताया गया है, सरलता की परिभाषा, सरलता वो होती है कि आप जो सत्य है बिना किसी कपटता के एक शत्रु को भी बता सकते हैं। So it's another interesting point, isn't it? तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं कि जो शुद्ध वैष्णव की कोई शत्रु ही नहीं होता है। So Vaishnava means simple, right? तो वैष्णव का अर्थ होता है सरल, Simple, pure-hearted, completely dependent on Krishna's intelligence and faith. सरल शुद्ध हृदय वाले और पूरी तरह से कृष्णा के बुद्धि और श्रद्धा के ऊपर That's निर्भर है। perfection of simplicity. ये है सरलता की सिद्धि। And that's why the most simple are the most intelligent. और जो सबसे ज्यादा सरल होते हैं वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान। That's why I say, who are the best devotees? इसलिए कहते हैं कौन है जो सबसे श्रेष्ठ भक्त है? The gopis. गोपी, Because they're the most simple, pure-hearted, loving devotees of the Lord. क्योंकि वो सबसे सरल और शुद्ध हृदय वाले भक्त हैं भगवान के। So the whole point of all the knowledge, all the gyan, all the vigyan is to have pure, unadulterated, unconditional love for Krishna. They've already achieved that to the highest level. तो ये So सारा they're more than the Vedas. तो ये सारा ज्ञान और ये सारी प्रक्रिया हमें जाने का अर्थ है कि ऐसे हम अंत में भगवान के प्रति शुद्ध अमिश्रित प्रेम को प्राप्ति कर सकें, तो वो इन सारे वेदों से ऊपर उठ चुके हैं, उन्होंने अंतिम चीज को प्राप्त कर लिया, Because they understand the purpose of the Vedas. क्योंकि वो वेद के उद्देश्य को समझ चुके हैं। Krishna says, by all the Vedas I am to be known. कृष्ण कहते हैं सारे वेदों के माध्यम से आप मुझे And जानें। it's not just about knowing Krishna, it's about loving Krishna, surrendering to तो Krishna. यहाँ केवल कृष्ण को जानने की नहीं, कृष्ण को शरणागत करना और कृष्ण को प्रेम करने So की बात की the जाती है। topmost Vaishnava is Vaishnava. तो वो सबसे सर्वोत्तम वैष्णव So वैष्णवी, most simple, but the most pure, but the most intelligent. तो सबसे सरल लेकिन सबसे शुद्ध और सबसे ज्यादा बुद्धिमान। So it says, Prabhupada said that a pure devotee, Vaishnava devotee, he doesn't consider anybody his enemy. तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो शुद्ध वैष्णव किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते हैं। Just like Jesus Christ, he said, my dear Lord, please forgive these people. They have no idea what are they doing. जैसे ईसा मसीह भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान आप इन लोगों को क्षमा कीजिए, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। So he doesn't consider that they're my enemy. तो वो उन लोगों को अपना शत्रु नहीं मानते। But those people, they think, oh, this person who's speaking the truth and exposing us, right? He's our enemy. लेकिन वो लोग जो देखते हैं कि जो सत्य बोल रहे हैं, हमारा सत्य लोगों के सामने बाहर निकाल रहे हैं, वो उनको शत्रु के रूप में देखते हैं। But pure devotee, simple-hearted Vaishnava, he doesn't consider anybody his enemy. लेकिन शुद्ध भक्त सरल हृदय वाले वैष्णव किसी को भी अपना शत्रु के रूप में नहीं Because he देखते, understands not a blade of grass moves without the will of the Lord. It's just Krishna doing that. क्योंकि वो समझते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर एक तिनका तक नहीं हिलता, तो ये भगवान की He इच्छा से हो रहा doesn't है। take it personal. तो कुछ भी अपने व्यक्तिगत So अपने ऊपर नहीं that's लेते why they don't have enemy. और इसीलिए उनके पास कोई शत्रु नहीं होता। Right? So someone who's really pure Vaishnava devotee, most simple devotee, he can actually, even someone who they consider him to be their enemy, he's actually so pure and merciful that he can even purify and shower his causeless mercy on them and make them into a devotee. तो
जो व्यक्ति कृष्ण के शुद्ध वैष्णव के प्रति जो शत्रु भी हैं उनके पास, लेकिन शुद्ध वैष्णव के पास इतनी शुद्धता होती है, वो अपनी कृपा से उन लोगों को भी भक्त बना सकते हैं। Otherwise, what is a simple, pure-hearted person doing, trying to talk to or explain anything to an enemy? वरना एक शुद्ध सरल हृदय वाला वैष्णव परम सत्य की बातें अपने शत्रु को क्यों बताने का प्रयास कर रहा है? So someone who's like that means they have no faith. अगर कोई ऐसा है, इसका मतलब उनके अंदर So कोई you श्रद्धा should नहीं not है। show your simplicity. You should not show your faith in front of someone who's faithless. ऐसा कहा जाता है, आप अपनी सरलता, अपनी श्रद्धा उन लोगों के सामने मत दिखाइए जो श्रद्धाहीन है, So that's considered aparad. और उसको अपराध माना जाता है। So what is this simplicity that we're talking about, that you should be so simple that you can speak that thing to your enemy? तो ये कौन से सरलता की बात की जा रही है जहाँ पे आप सत्य अपने शत्रु को भी बता सकते हैं? The one who considers you their enemy. क्या वो लोग जो आपको अपना शत्रु मानते हैं? That means you should be so simple, so pure, that your causeless mercy can turn even someone who considers you their enemy, you can purify them and shower mercy on them and change their heart and mind and consciousness. यानी कि आप इतने सरल और इतने शुद्ध हृदय वाले हैं कि आपकी अहेतु की कृपा से ऐसा व्यक्ति जो आपको अपना शत्रु मानता है वो भी शुद्ध होकर भक्त बन सकता So है। if you're so simple, you're so pure, you're so merciful, so qualified, even someone who's they consider you their enemy, even you can change their heart and mind and consciousness. तो अगर आप ऐसे सरल हैं, शुद्ध हृदय वाले हैं, ऐसे आपके अंदर योग्यता है, ऐसी अहेतु की कृपा आप किसी को बरसा सकते हैं जो आपका शत्रु भी भक्त के में परिवर्तित हो जाए। And if we're not so simple, और अगर हम इतने and सरल not नहीं so हैं, pure, इतने शुद्ध नहीं and हैं, not so और intelligent, इतने बुद्धिमान नहीं हैं, but still you have some faith, लेकिन फिर भी आपके अंदर कोई श्रद्धा you है, should not try to go to someone who's like enemy and try to preach to them, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाके प्रचार नहीं करना चाहिए जो आपका शत्रु है, because they're faithless. क्योंकि वो श्रद्धाहीन है। And if you hear any of their faithlessness, then that, if you're not strong enough, that can contaminate and bewilder you, and then you can also become faithless or also become aparadi. और फिर उनका श्रद्धाहीनता जब आप उनसे श्रवण करेंगे तो आपकी श्रद्धा भी खत्म हो जाएगी और आप भी दूषित हो जाएंगे, कलमशों से भर जाएंगे। So that's why when you first read that, I'm like, well, why would some simple-hearted person be speaking to an enemy? तो जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मैंने सोचा कि क्यों कोई सरल हृदय वाला व्यक्ति सत्य Well, जाके someone शत्रु को they बताएगा। consider that simple-hearted person is their enemy. अगर कोई ये मानता है कि वो सरल हृदय वाला भक्त मेरा शत्रु है, If you look at it from Tattva Vichar point of view, then that means really pure Vaishnava. लेकिन तत्व विचार दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो यहाँ शुद्ध असल शुद्ध वैष्णव की बात की जा रही है, जो सबसे ज्यादा And सरल है pure and intelligent and merciful. और शुद्ध है, बुद्धिमान है और कृपालु है। They can even change someone who considers them their enemy. और वो ऐसे लोगों को भी परिवर्तन कर सकते हैं जो उनको अपना शत्रु मानते हैं। If we're not on that platform, then we should not take a risk, तो अगर हम उस स्तर पे नहीं हैं तो हमें ये खतरा नहीं लेना चाहिए, especially if we cannot defeat them. और विशेष करके जब हम उनको हरा नहीं सकते। Whatever their lack of faith is, or their doubts, or their philosophical misconception, you have to be able to overcome that. और जो भी उनका श्रद्धा की कमी है या उनका संदेह है, प्रश्न है, आपको इतना सशक्त होना होगा कि आप उनके संदेहों को खत्म कर But सकें। if we're not simple, pure-hearted enough, and did not hear sufficiently from Krishna Parampara, will not have that sufficient strength and spiritual intelligence and faith to be able to purify and to overcome any type of opposition that can be presented from Maya's side. अगर हमने श्रवण नहीं किया है कृष्ण परंपरा में सही तरीके से तो हम इतने सरल या शुद्ध हृदय वाले नहीं हो सकते हैं कि माया हमारे सामने जो भी प्रस्तुति रखेगी हम उनको हरा पाएंगे। Does that help you? क्या आप समझ पाए? Yeah, but like practically we see sometimes we try to convince the so-called enemies, we try to reveal the truth, but We're our own worst enemy. तो प्रभु कह रहे हैं कई बार हम जो है शत्रु को सत्य जाकर बताने का प्रयास करते हैं, उनको आश्वस्त करने का प्रयास करते हैं उस सिद्धांत के ऊपर। तो गुरुदेव बता रहे हैं हम खुद के ही सबसे बड़े शत्रु हैं। Our mind and senses is sabotaging our own spiritual advancement. We have enough demons, we have enough enemies within ourselves. And purify ourselves,
if we can't even do that to ourselves, then who else are we supposed to be doing this to externally? तो अगर हम खुद को प्रचार नहीं कर सकते, खुद के संदेहों के असुरों को मार नहीं सकते, खुद को आश्वस्त नहीं कर सकते, खुद को शुद्ध नहीं कर सकते, तो कैसे हम सोचते हैं हम किसी और के साथ ये सारी चीजें कर पाएंगे? That means you're not convinced. इसका मतलब हम खुद Otherwise, it आश्वस्त would be working, नहीं, वरना ये कार्य कर रहा होता। right? So if it's not working, means you're not really convinced. Who exactly are you going to convince इसका with your मतलब preaching? अगर ये काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप खुद आश्वस्त नहीं है, तो आपके प्रचार के माध्यम से आप कैसे किसी और को जाकर आश्वस्त कर पाएंगे? It's like that guy, I was distributing books and I was horrible consciousness and I was saying, here's a book, it'll tell you how to be happy. तो एक बार जब मैं किताबें बांट रहा था और मैं बहुत ही खराब चेतना में था और मैं ऐसे व्यक्ति से मिला, फिर मैंने उनको कहा ये किताब लीजिए जी, आपको बताएगा कैसे आप सुखी हो सकते हैं। And the guy said, you mean happy like you? उन्होंने कहा आपके जैसा सुखी होऊंगा। And I was like, oh, it's like Krishna just slapped me, you know? और मुझे ऐसा लगा कृष्ण ने जैसे मुझे थप्पड़ I'm मारा। completely suffering, I'm miserable, मैं पूरी तरह से दुख में हूँ, bad कष्ट में हूँ, mood, bad consciousness, खराब भाव में हूँ, and खराब I'm चेतना trying to में like sell this book that's supposed to make them happy. हूँ। और मैं ये किताब बेचने का प्रयास कर रहा हूँ जो उन लोगों को सुखी बनाने वाला है। And the guy's looking at me and he's like, you know, basically you're not like a ringing endorsement of this book, are you? और वो व्यक्ति मेरी तरफ ऐसा देख रहा था कि ये किताब में जो बातें बताई गई आपके अंदर ही कार्य नहीं कर रही, देखकर ऐसा लगा। So that was such a slap. I had to sit down and pray after that one. Seriously. थप्पड़ लगा कि उसके बाद मैं खुद बैठ के मुझे थोड़ी गंभीर प्रार्थना करनी पड़ी। Because Krishna's like, how can you preach? How can you distribute books and inspire these people? तो कृष्ण ये बताने का प्रयास कर रहे थे आप कैसे प्रचार कर सकते हैं, किताबों को बांट सकते हैं, अगर आप ऐसे भाव में हैं, ऐसी चेतना में हैं, कैसे आप किसी की मदद कर सकते हैं? आपको I अपना got भाव बदलने की humbled जरूरत है। out. मैं पूरी तरह से That's विनम्र what I हो said. गया। I got a good slap. इसलिए मैंने कहा मुझे एक अच्छा थप्पड़ मिला। That's not attractive. No one's going to be attracted to that. और ये आकर्षक नहीं होगा, कोई भी इससे आकर्षित नहीं होगा। So that's why I say, you know, first let us be convinced. इसलिए मैंने कहा कि पहले हम आश्वस्त होने का प्रयास करते हैं, Then we'll have confidence if we can actually apply it on ourselves and get mercy and understand the effects of that. और तब हमें विश्वास मिलेगा क्या हम इसे खुद के ऊपर लगाकर वो सारी कृपा प्रभाव अपने ऊपर देख पा रहे हैं, तब हम किसी और को ये दे पाएंगे। Then when you go to try, then you'll feel, okay, this works. I saw from myself. और तब आप कह I सकते हैं saw from my guru. I saw from this process. It works. I have confidence. I have faith. Now, maybe I can try to share to somebody who might be interested to consider what I'm saying. और तब आप कह सकते हैं कि हाँ ये इस तरीके से काम किया जो मेरे गुरु ने बताया, जो मैंने पढ़ा और जो मैंने प्रक्रिया को पालन किया, तब आपको उसमें श्रद्धा या विश्वास मिलेगी, तब आप जाके किसी और को वो श्रद्धा या विश्वास दे सकते हैं। Otherwise, it's like a war of like, you know, gyanis, like let's go out there and defeat these people, you know. वरना ऐसा है कि कोई ज्ञानी युद्ध पे गया हो और दिखाने के लिए कि चलो I got दिखाते my हैं। gyan. Let's see who's smart out there, you know. Let's have some debates with the people, you know. मैं अपना ज्ञान लेके तैयार हूँ, चले देखते हैं बाहर कौन कौन लोग हैं, उनके साथ मैं थोड़ी बहस करूँगा। I'm loaded up for arguments today, you know. आज पूरा मैं तैयार हूँ बहसबाजी करने Sham के goes लिए। out there, so okay, let's see, you know. I'm gonna argue with everybody. You know? श्याम ऐसा करते हैं, कहते हैं आज मैं सभी के साथ बहसबाजी करूँगा। So we gotta have the right mood, right understanding. सही भाव और सही समझ में आने की जरूरत है। Let me just finish it because he's not quite convinced. अभी मुझे थोड़ा और समय दीजिए, अभी तक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुए हैं। He needs to hear more. इनको और थोड़ा सुनने की जरूरत है। Like You better be happy, man. If you're not happy, you can't stay here. आपको खुश होना चाहिए, अगर आप खुश नहीं हो सकते आप यहाँ नहीं रह That's सकते। prerequisite, और ये पहली जरूरत है। right? If you're not happy but you want to be happy, then you can come. और अगर आप सुखी नहीं, आप सुखी होना चाहते हैं तो आप यहाँ आ And सकते हैं। somehow daily try to be happy. और किसी तरह से हर दिन खुश होने का प्रयास कीजिए। But if you're coming and you don't want to be happy and you're going to stay unhappy and miserable, then you cannot stay here. और लेकिन अगर आप हर दिन आते हैं, आप सुखी नहीं हो रहे हैं या सुखी नहीं होना चाहते हैं, तो आप यहाँ नहीं रह सकते। You're bringing your dark clouds here. You know आप what I अपने mean? अंधेरे काले बादल लेकर आ We're रहे हैं। trying to ask the sunlight to come, you know, and the darkness is blocking out the sun, you तो know. हम सूर्य को बुलाने का प्रयास करेंगे जो इस अंधकार को पार कर सकता Mr. हो। Negativity. तो सारी नकारात्मक चीजों को बाहर निकालेंगे। It'll never work. ये कभी काम नहीं करेगा। So,
like Srila Prabhupada was simple and he was fully convinced, but he was revealing the truth to others, but people were not getting convinced, they were not accepting, many people. So how we can You understand? try, if you're authorized, empowered, you're convinced, you're trying to help somebody, try, but if they're not interested, then, don't bother them. तो प्रभुपाद पूछ रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद शुद्ध वैष्णव थे, तो वो लोगों को, सभी लोगों ने प्रयास किया आश्वस्त करने का, लेकिन बहुत सारे लोग आश्वस्त नहीं हुए। तो गुरुदेव बता रहे हैं, अगर आप वो सशक्तिकरण प्राप्त है, आप जाके प्रयास कीजिए लोगों को आश्वस्त करने का, लेकिन अगर उनको कोई रुचि नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। Then they'll just become disturbed. तो वो लोग केवल परेशान हो So जाएंगे। then you're causing them to become more and more disturbed. तो यानी कि आप उनको और ज्यादा परेशानी में डालने का कारण बन So रहे हैं। don't preach to them. तो ऐसे लोगों को प्रचार नहीं करिए। Try and see प्रयास if they're कीजिए। open, और देखिए अगर वो खुले विचारों वाले हैं, and if they'll actually want to hear what you have to say, और अगर असल में वो सुनना चाहते हैं जो आप कहना and you have चाहते to be हैं, able to help them with what you are going to say, और आपको योग्य होना होगा उनकी मदद करने के लिए जो आप Then उनको कहने try. वाले हैं। और फिर आप even प्रयास कीजिए repeatedly try in different ways. और बार बार प्रयास कीजिए अलग अलग तरीकों But से। if they just keep saying not interested, then don't bother them. लेकिन Don't अगर वो try बार to बार preach to them. कहते रहते हैं कि मुझे कोई रुचि नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है, तब आप उनको Just give them अनदेखा some कर दीजिए। prasadam if they'll take prasad. बस उनको कुछ प्रसाद दीजिए, अगर वो कुछ प्रसाद लेते हैं तो। Sometimes you have to trick them, कभी कभी उनको थोड़ा Because if you come with छल करना burfi or पड़ता है। some, sandesh or something in the West, they don't know what is that. तो वो विदेशों में, पश्चिमी देशों में कुछ बर्फी या कुछ संदेश लाकर उनको देते हैं। So you have to, make like some, carrot chip cookies or something like that. Something that looks something they're familiar with, right? तो उनको ये सब बातें, ये सब चीज़ें समझ नहीं आती है, तो उनको कैरट, कुकीज़, ये सब चीज़ें देनी पड़ती है, ये वो चीज़ें जानते हैं। We used to make like this big salad, like really opulent salad. तो हम जो है सलाद बनाते थे, बहुत ही भारी भरकम सलाद। If we went to the family house, right, you have to eat something. So we would make something that we could eat, and also others can also eat the prasadam, right? और इस तरह के प्रोग्राम में हम ऐसे सलाद बनाते थे, लेकिन बहुत भारी भरकम, तो आप भी साथ में ले सकें और बाकी लोग भी ले सकें। Because you can't really preach to them. क्योंकि आप असल में उन लोगों को प्रचार नहीं कर But सकते। once they get purified लेकिन एक बार जब वो शुद्ध हो जाएंगे by the mercy of that prasadam, उस प्रसाद की कृपा से, then they will start coming. Can I ask you about God, about Krishna consciousness? And, sure, sit down. Let's have a conversation. Before the prasadam, I don't talk to anybody. तो तब उसके बाद में थोड़ा प्रसाद लेके शुद्ध हो जाते हैं, तब आकर बात करते हैं, क्या हम भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, कृष्ण भावना में थोड़ी बात कर सकते हैं? तो हम कहते थे हाँ बैठिए, चलिए हम बात करते हैं। उसके पहले First, हम give them बात नहीं करते। that medicine, that prasadam. तो पहले उनको वो दवा देते हैं, Especially if they're really stubborn, विशेष करके जब अगर वो बहुत जिद्दी हो। I remember when my grandfather was, leaving his body, my father, he brought me to the old age home. And he said, can you bring some of those spiritual food with you? मुझे याद है जब मेरे दादाजी, And like put it in his mouth, तो मुझे याद है कि जब मेरे दादाजी का देहांत होने वाला था, तो मेरे पिताजी और मैं वहाँ उनको उस वृद्धाश्रम में देखने के लिए गए, और मेरे पिताजी ने मुझसे कहा क्या तुम वो आध्यात्मिक भोजन लेकर आए हो उनके मुंह में देने के लिए। So somehow my father knew there's something powerful about that food, that prasadam. तो किसी तरह से मेरे पिताजी को ये पता था कि उस प्रसाद में, उस आध्यात्मिक भोजन में कुछ शक्ति So he है, getting ready to leave his body, और वो अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो and रहे हैं। somehow, my father asked me, can you go with me and you can put this spiritual food in his mouth? And he has like no teeth, he's ready to die. I'm like stuffing like some balabas like in his mouth, तो मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया कि वो अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं, और मैं जो ये प्रसाद लेके उनके व्यक्ति के जिनके मुंह में दांत नहीं है, मैं उसके मुंह में प्रसाद ये डालने का प्रयास कर रहा And I was thinking, how fortunate, right? He's like 90 something years old. He nothing spiritual, and the last thing before he leaves his body is eating, Jagannath Mahaprasad. मैं ये सोच रहा था ये कितने भाग्यवान हैं कि 90 साल तक की उम्र में कभी भी उन्होंने कुछ ऐसा आध्यात्मिक भाग्य उनको नहीं मिला हो, लेकिन मृत्यु के आखिरी समय में उनके मुंह में जगन्नाथ प्रसाद है। Mercy, causes ये mercy. अहेतु की कृपा है। So we have to understand all of those, dynamic. तो हमें इन सारे विज्ञान को समझना Who होगा। wants to? My Gurudev used to say, first of all, if you do know something, first you should find out. If I try to tell this person
would they consider what I'm saying and really consider it and maybe accept what I'm saying? If not, then don't even bother with them. तो मेरे गुरुदेव बताया करते थे कि अगर आपको कोई जानकारी है और आप उसे किसी को बताने वाले हैं और लोग उसको ना तो सुनने के लिए तैयार है, ना उस पर विचार करने के लिए, ना उसको सम्मान करेंगे, तो क्यों आप परेशानी ले रहे हैं उनको लोगों को बताने के लिए? I remember one guy in Estonia. Remember this story? Like he became devotee, and then there was like a snowstorm, and then his wife wasn't a devotee, and then she went on the back porch to get the clothes or something like that, and then he locked the door. And she's outside in the blizzard, and he said, "Chant Hare Krishna." He's like trying to make her chant Hare Krishna before he lets her in the warm house, you know. This is not like effective preaching, you know. एक भक्त थे जो प्रचार कर रहे थे एस्टोनिया में, तो वहाँ पे जब ठंडी बर्फीली हवा चल रही थी तो वो बाहर गई थी घर के बाहर कुछ कपड़े निकालने के लिए, और उस भक्त ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। उनको कहा अगर आप हरे कृष्ण नहीं बोलेंगी तो मैं आपको घर के अंदर आने नहीं दूंगा, आपको बर्फ में बाहर ठंड में झेलनी पड़ेगी। ये अच्छा प्रचार नहीं है। And even if that lady chanted Hare Krishna, it was just to get in the house. और यहाँ तक कि वो महिला हरे कृष्णा बोल भी दे, लेकिन वो केवल घर के अंदर बस आने So के लिए। you think she became more favorable? How insane this guy's behavior? तो आप सोचते हैं कि वो ज़्यादा प्रभावित होंगे इससे कि ये व्यक्ति कितना पागलपन से व्यवहार करता है? तो ये सब पागल लोग हैं। I would have froze to death out there. तो वो बर्फ में बाहर जम कर मरने वाले। Chant Hare Krishna. Write Hare Krishna on the frost on the window. You know? और जमी हुई खिड़की के कांच के ऊपर आप हरे कृष्णा लिखिए। Perfect grammar, you know, Sanskrit, you know, then I'll let you in, you know. और कहेंगे पूरे संस्कृत में अच्छे से लिखना होगा तब मैं आपको आने दूंगा। Mataji, tell me. तो जी बताइए। Hare Krishna. Я вспомнила... You have a microphone? Я по-русски скажу, Маджи перейдет туда мне микрофон. Забавная история, когда Шрила Брадов рассказывал, реальная история, которая была в России. Маджи, она распространяла книги, у нее было такое плохое сознание. И она сказала, пожалуйста, возьмите эти книги, они вас сделают счастливым. И заплакала. И люди стали ее утешать и ей что-то простое проповедовать про то, что все пройдет. So the similar story happened in Russia. One Mataji, she was distributing books and she was completely unhappy. And she was Is that her? तो माता जी कह रही है कि एक ऐसी कहानी हुई, एक माता जी रशिया में किताबें बांट रही थी और वो पूरी तरह से दुख में थी। तो गुरुदेव बता रहे क्या आप थे वो? I'm just checking because at least I was honest in saying it was me, you know. She could just be saying some Mataji in Siberia was unhappy. मैंने तो अपनी ईमानदारी वाली कहानी बताई थी कि वो मैं था जो किताब बांट रहा था, पूरी तरह दुखी था। ये माता जी कह रही वो कोई और माता जी जो दुखी थी और किताब बांट रही थी। Anyway, let's say it's some other lady. चलिए हम कहते हैं कोई और महिला थी। So what happened? फिर क्या हुआ? So she approached one person to buy a book and she started crying like, please buy this book. And then people start to preach to her, don't worry, everything gonna be alright. वो माता जी जो है रोना शुरू कर दी जब वो किताब बांटती थी कि आप, और बाकी लोग आके उनको प्रचार करने लगे आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। I never heard of that tactic before. तो मैं ये ऐसे तरीका तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। It's not the end of the world, you know. Just pray to God, you know. अभी दुनिया का अंत नहीं हुआ है, भगवान से प्रार्थना कीजिए। Please read your own book that you're trying to distribute to me. आप वो किताब खुद पढ़िए जो आप लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। You said it will make you more happy. You know? आप कह रही हैं आपको और ज़्यादा सुखी बनाएगा। Here, let me read it for you. मैं आपके लिए What God says, you know. यहाँ कहा है ऐसा, Chant and be happy. You know? जब कीजिए और सुखी रहिए। Еще вопрос по вчерашней теме про Дживу. Вопрос такой, что мы не были на Галука в Вриндаване, мы не были на Вайкунтхе. То есть мы пришли, мы Нитябадхи, мы пришли из области Татаства, и вообще, что это такое и чем мы там занимались. So the question regarding Jiva Tattva, we... Shiva or Jiva? Джива! Jiva. Jiva. Oof. Джива! Jiva. तो माता जी पूछ रही जीव तत्व से संबंधित एक प्रश्न है। Who shot the arrow?
Кто стрелял? ये तीर किसने चलाया था? It's like the guy who gets shot on the battlefield with the arrow, right? And it's in his chest. And instead of figuring out how he's going to get it out and survive, he's saying, who shot that arrow? You know? Yes, Like that's his immediate concern, like who shot the arrow, you know? जैसे युद्ध Get में an अगर arrow in आपको your chest, like just try to get out of the trouble, right? जैसे Who's the युद्ध में original, who made the arrow? Which company made the arrow? तो जैसे युद्ध में आपको तीर लगा हो तो उस समय ये सही समय नहीं है ये पता लगाने के लिए कि ये तीर किसने चलाया। सबसे तुरंत काम ये करना है कि ये इस तीर को बाहर निकालना, मुसीबत से बाहर निकालना। ये पता नहीं लगाना है कि ये तीर जो है कौन सी कंपनी ने बनाया है। I mean, there might be a good time to, kind of think about that, right? Especially if it was effectively going into your chest, But maybe like right now, first try to like survive, then later you could do some more investigation, तो ये बिल्कुल सही समय नहीं है जब तीर जो है आपके छाती के अंदर घुसता जा रहा है और आपके अंदर और गहरा प्रभाव दे रहा है। तो ये सही समय नहीं है इसके बारे में खोजबीन करने का। Who shot this arrow? ये तीर किसने चलाया? So, फिर So we are not coming from Krishna Loka. We came from Tataska region. So what soul is doing there? In Tataska? no, you came from. Krishna said, "I am the seed-giving Father." Right? So Krishna, in the form of the Lord, created the soul, part and parcel of Krishna. तो माता जी पूछ रहे हैं जो तटस्थ स्तर में जो आत्माएं हैं वो वहाँ से पतन होता है उनका, तो वो वहाँ करती क्या है? तो गुरुदेव उत्तर दे रहे नहीं कि जीव जो है वो उनके पिता जो है कृष्ण है वो उनको बीज देते हैं। But where did the birth take place? लेकिन ये जन्म कहाँ पे हुआ? That's the question. ये सवाल है। What was the location of the birth? वो जन्म का स्थान कहाँ है? Father is absolute, no doubt. तो पिता परम सत्य हैं। It's Krishna in one form or another, one incarnation or another. वो कृष्णा ही है एक या किसी दूसरे अवतार के रूप में है। So, फिर how do you say? आप कैसे So what was बताएंगे? the question, So Ricardo? basically your question, if you came from Tataska region, what soul is doing there? Like what is your activity What is your activity? in this Tataska region? You have to make a choice. Чем душа занимается? तो माता जी प्रश्न You पूछ want रहे to go हैं। to the spiritual world or the material world? तो माता जी पूछ रहे हैं कि जो आत्मा है जो तटस्थ स्तर में होते हैं उनका कार्य क्या होता है, वो क्या कर रहे होते हैं वहाँ पे? तो गुरुदेव बता रहे हैं वहाँ आपको एक चुनाव करना होता है, या आप आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं या And भौतिक since जगत में we're all जाना चाहते हैं। sitting here, it looks like we made our original choice, right? और अब हम यहाँ सभी यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब हम सब ने यहाँ आने का चुनाव किया है। Are you satisfied with that? क्या आप संतुष्ट हैं इस उत्तर से? I was thinking about, I answered this question, I made this statement yesterday, which I never heard before. और कल जब हम इसका उत्तर दे रहे थे मैं सोचा था ये सब तो मैंने कभी नहीं सुना। And I was thinking about, how Krishna inspiring us to say something, and I was saying, I never thought of that before. और मैं ये सोच रहा था कैसे कृष्ण हमें प्रेरणा दे रहे हैं इन विषयों के ऊपर बात करने के लिए, मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में। So you have unlimited planets and unlimited universes. तो असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य जीव हैं। And then you have unlimited living entities in unlimited planets and unlimited material universes. तो असंख्य जीव हैं असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य लोकों में that are being created, manifested and destroyed eternally. और उनको निर्माण किया जा रहा है, प्रकट हो रहे हैं और फिर उनका विनाश भी हो रहा है नित्य रूप में। So that's also eternally going on. और वो भी नित्य रूप में चल रहा है। And then all of those souls fell from Goloka Vrindavan. और क्या वो सारे जीव गोलोक वृंदावन से गिरे? Does that make any sense? क्या इसका कोई भी मतलब बनता है? Unlimited souls and unlimited planets and unlimited universes throughout eternity. All of those living entities, they all fell from Goloka Vrindavan, Krishna Loka. तो असंख्य ब्रह्मांड असंख्य लोकों में असंख्य जीव, क्या ये संभव है कि उनमें से सारे गोलोक वृंदावन से गिरे हों? Doesn't make sense. इसका कोई मतलब नहीं बनता।
It says you have to be completely free from sin to even go there. कहते हैं आपको पूरी तरह से सारे पापों से मुक्त होना होगा अगर आप वहाँ जाना भी चाहते हैं. So what do you think? There's people somehow like trespassing in that place who are hiding some kind of gross or subtle sinful desires? तो आपको क्या लगता है वहाँ पे कुछ लोग ऐसे पहुँच गए थे गलती से जिनके पास कुछ न कुछ स्थूल या सूक्ष्म रूप से पाप कर्म की भौतिक इच्छाएं थी. So, you know, Krishna's going to make a rule that only when you're coming from this platform do you have to be completely free from sin to go there. But the people who are eternally there, some of them are filled with sin. तो कृष्णा ने एक ऐसा स्तर तय किया है कि आपको अगर उस वहाँ जाना है तो आपको स्वयं को पूर्ण रूप से पापों से मुक्त करना होगा. लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो नित्य उस स्थान में हैं लेकिन उनके अंदर कुछ पाप की इच्छाएं हैं. How's it possible? ये कैसे संभव है? There's no modes of nature, there's no maya, there's nothing but Swarup Shakti. तो प्रकृति के गुणों का कोई प्रभाव नहीं, कोई माया नहीं, केवल वहाँ पे It's all स्वरूप शक्ति का internal प्रभाव है. spiritual energy of the Lord. भगवान के अंतरंगा शक्ति का प्रभाव है. There's no other kind of energy there. वहाँ पे कोई भी दूसरी शक्ति नहीं है. All sinful desires, sinful reactions, demoniac qualities, modes of material nature, this means all maya. This is Mahamaya, Krishna says, but that's a material world. सारी पाप की इच्छाएं, आसुरी का व्यवहार और प्रकृति का गुण ये सारा भौतिक जगत में होता है. So that Maya Shakti is not there in Vaikuntha. तो ये माया शक्ति वैकुंठ लोक में नहीं है. Only Yoga Maya. केवल योग माया है. And that Yoga Maya is just meant to enhance those eternal loving relationships. और योग माया बनी है सारे सभी के नित्य प्रेम में संबंध को और बढ़ाने के So लिए. there's not one drop of any type of Maya, Mahamaya Shakti in the world, which everything is Swarup Shakti. तो एक बूंद भी महामाया शक्ति का वहाँ नहीं है जहाँ सब कुछ आध्यात्मिक शक्ति से. You don't even need the sun and the moon there. It's all just self-illuminating. वहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ स्वयं वहाँ प्रकाशमान है. So where does this sinful contamination and desire, how can that possibly come from especially Vaikuntha, but especially from Krishna Loka, Goloka तो Vrindavan? कैसे कोई ये पाप की इच्छा या कोई कलमश वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन में आपके अंदर प्रवेश कर सकता है? And then unlimited living entities and unlimited planets to unlimited universes have all fallen from that place? और असीमित जीवात्माएं, असीमित ब्रह्मांड के, असीमित लोकों के वहाँ गोलोक वृंदावन से गिर गए. You know, it'd almost be like, okay, there was one or two people just to make everything complete, right? You could try to make this type of argument, which is also not valid. But if you're saying 1/4 of the total creation throughout eternity, they all fell from the most perfect, highest, purest, perfect place, it makes no sense on any platform. तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हो सकता है कि इसको माना जाए कि प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए 1 या 2 जीवात्मा उस नित्य जगह से हो सकता है यहाँ गिरे, जो कि वो भी सही तर्क नहीं है. तो ऐसा पूरे संपूर्ण सृष्टि का 1/4 भाग कहते हैं जो पूर्ण नित्य जगह है, शुद्ध जगह से इस भौतिक जगत में गिर गई है. So there's no imperfection there. तो वहाँ कोई अपूर्णता नहीं है. And then if you have any imperfection, you're not allowed there. और अगर आपके अंदर कोई भी अपूर्णता है तो आपको वहाँ अनुमति नहीं है. So where does the imperfection come from? तो ये अपूर्णता आई कहाँ से? Where is it that in Krishna's own planet, Maya is more powerful than Krishna? वो कृष्णा के ऐसे कौन से लोक में जहाँ पे माया कृष्णा से ज़्यादा शक्तिशाली है? So Krishna cannot purify them and cannot protect them in his holy dham. तो कृष्णा उनको बचा नहीं सकते, उनको शुद्ध नहीं कर सकते अपने ही पवित्र धाम में. And then somehow his Maya Shakti, Mahamaya Shakti, which is only in the material world, somehow or other on her own power ends up in Vaikuntha. और किसी तरह से ये जो माया शक्ति जो केवल भौतिक जगत की शक्ति है
किसी तरह से खुद से ही वहाँ पर पहुँच गई। She's supposed to be servant of Krishna. तो वो कृष्णा की दासी हैं। And then she's just acting on her own power to overtake and over control Krishna's power and protection and mercy to all of his highest level of devotees. How is this even? Think about it. तो कैसे अगर वो माया की दासी हैं, शक्ति हैं, तो कैसे वो अपनी शक्ति से कृष्णा के आश्रय और रक्षण को खत्म करके जो कृष्णा अपने भक्तों को कृपा के माध्यम से उनको सुरक्षित रखते हैं, उससे वो आगे निकल जाते हैं। And Prabhupada says all of these things in his books and teachings. और प्रभुपाद ने अपनी किताबों और There's शिक्षाओं में no ये सारी modes of बातें कही material हैं। nature there. वहाँ पे किसी तरह का Everything's प्रकृति का completely का प्रभाव नहीं है, सब pure, कुछ पूर्ण perfect, तरीके से free from शुद्ध है, sin. पूर्ण है, सभी पापों से No रहित, asatsanga. कोई असत्संग नहीं है वहाँ, All satsanga, all swarup shakti. केवल सत्संग, केवल स्वरूप शक्ति है वहाँ। Prabhupada says that. प्रभुपाद ने ऐसा कहा है, Why don't they quote that? तो वो इस बात को क्यों नहीं बताते? Explain after this conversation. You explain to me how those people, 25% of the total creation throughout eternity of unlimited living entities and unlimited planets and unlimited universes all made the same mistake in Goloka Vrindavan. तो आप मुझे ये बात समझाइए कि कैसे 25% पूरी सृष्टि की जनसंख्या जो है, उन्होंने जो सबसे पूर्ण जगत से भौतिक जगत में गिरने का निर्णय लिया। It says that your perfect loving relationship with the Lord, it only increases every day eternally. It's ever increasing. ऐसा बताया जाता है अगर आपका भगवान के साथ नित्य प्रेम में संबंध है, ये हर दिन और ज्यादा गहरा और ज्यादा बढ़ता जाता है नित्य रूप से। It never says, sometimes it's stagnated and then sometimes it goes backwards, कभी ऐसा नहीं कहा जाता है, कभी-कभी ये जो है रुक रहा है और कभी-कभी ये वापस भी जाता है। It's constantly and ever increasing for ये the rest of eternity. और ये निरंतर बढ़ता रहता है। That's in Prabhupada's books. ये प्रभुपाद की शिक्षा है। Descriptions. Why don't they quote all of that? तो ये सारे विवरण हैं उनके, तो ये सारी बातों को क्यों नहीं बताते वो? Conveniently left out in the argument, I guess, huh? मुझे लगता है ये उनकी बहसबाजी में उनको समर्थन नहीं कर रहा था। Now, here's an interesting question. Why do they have to make it look like everyone came from Goloka Vrindavan? तो अब ये प्रश्न है कि What's the rationale that you will overlook all of the quotes, all of Guru Sadhu and Shastra to just kind of stubbornly stick on this point that we all came again, kind of, how do you call it, apasadanta, some bogus conclusion. How can they be so determined? Are they that stupid? तो वो कैसे इसी अपसिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और सारे तर्कों को और गलत तरीके से समझ रहे हैं और अंत में इस निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं। Because everything is there. Why are they ignoring it? क्योंकि सब कुछ वहाँ मौजूद है, लेकिन वो उसको अनदेखा क्यों कर रहे हैं? And then you have to understand, this is tied to Guru Tattva. और आपको ये समझने की जरूरत है, ये गुरु तत्व से जुड़ा हुआ है। You see, they want to project that they're Nitya Siddhas. वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो नित्य सिद्ध हैं। They don't want you to know, even if you know they were hippies and drug addicts and all of this other thing, really, that's just a pastime. तो यहाँ तक कि वो ये भी मानने के लिए तैयार हैं कि वो पूर्व में हिप्पी थे और नशा करते, नशे के धुत में लगे रहते थे, लेकिन वो कहते हैं ये सब हमारी लीलाएं थी। This is just to show you how powerful Mahamaya is. तो बस आप लोगों को दिखाने के लिए कि माया And कितनी how शक्तिशाली है powerful is Mahaprabhu's devotees' mercy. और महाप्रभु के भक्तों की कृपा कितनी This शक्तिशाली is है। what they say. This is part of their philosophical manipulation. और ये वो कहते हैं ये उनके सैद्धांतिक बनावटीकरण का माध्यम। But the underlying rationale behind it is they need to project that they are Nitya Siddhas coming from, that they have eternal loving relationships with Radha and Krishna. They are Nitya Siddhas, so actually that's who they are and that's why you should accept them as your guru. और असल में वो ये दिखाने का प्रयास करना चाहते हैं, भीतरी कारण नहीं है कि वो सबके सामने ये प्रस्तुत करना चाहते हैं वो राधा कृष्ण के साथ उनका नित्य संबंध है और वो नित्य सिद्ध है। And that's why those गुरु के रूप में स्वीकार करें। And that's why those are the first people who start playing all of this gopi bhav business. और यही वो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने ये गोपी भाव
व्यापार शुरू किया था। Because if they know some Rasa Shastras and the Sandarbhas and all of these Goswami literatures, now they have jnana, right? And they can understand all of these subtle kind of emotional kind of descriptions there, and they can try to mimic that from the material platform. So they're mimicking the emotional kind of expressions and then giving you a philosophical basis which is beyond anything that you can understand, which substantiates, you know, from their point of view, that they are eternal servants of Radha and Krishna. They're gopis, they're manjaras. तो वो इन सारे गोस्वामियों के ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, रसशास्त्र, संदर्भ, और फिर उसी को लोगों के साथ अपने सैद्धांतिक समझ के साथ लोगों के सामने इस तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, नाटक को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो भी इसी लीलाओं के साथ में नित्य सिद्ध हैं। That's why they're being so stubborn. और इसीलिए वो इतनी जिद्दी हैं। Because I couldn't understand. I was praying to Krishna. तो मैं समझ नहीं पाया। Why are they so stubborn when everything is there in Prabhupada's? Why they're not accepting Prabhupada's other statements? कि मैं प्रभुपाद गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा था कि ये लोग सब कुछ बहुत साफ तरीके से प्रभुपाद के निर्देश में बताया गया है, फिर भी ये लोग इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? It's like in America, they had this illegal, you know, presidency, right? Where the guy cheated to be the president. जैसे अमेरिका में एक नियम है कि अगर कोई ठग कर राष्ट्रपति बन गया हो, So the whole apparatus, you know, the CIA, FBI, the social media, mainstream media, like everybody has to just quote the same, एक ही बात कहेंगे that this is legitimate. कि ये सही है, And anyone who challenges it, anyone who brings any other facts or information which exposes the cheating, they immediately have to be excommunicated or cancelled out of this society. और जो भी कोई भी ऐसा सत्य प्रस्तुत कर सकता है जो इन लोगों की ठगी को लोगों के सामने दिखा देगा, तो तुरंत ही उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। So it's same dynamic, तो वही कार्य यहाँ पे same किया जाएगा। exact dynamic. It's an illegitimate regime. वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जा रही है। And then if you can substantiate all of that, okay, they're Nitya Siddhis, they're you know, they're Manjaris, they're, you know, now when they say we're the ultimate authority, now this is also why you should accept the GBC as the ultimate managing authority. तो जब Because if this is who they are, and this is how advanced they are, and you're not, that's why you have to accept them as absolute authority. तो वो लोगों के सामने ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो नित्य सिद्ध हैं, मंजरी हैं, और इसीलिए आप लोगों को जीबीसी को स्वीकार करना चाहिए उस स्तर पर, क्योंकि आप लोग उस स्तर पे नहीं हैं, लेकिन ये सभी लोग उस स्तर And पे if you question the legitimacy, हैं। और फिर जब आप or you उनके bring ऊपर सवाल facts उठाते and हैं, रeceipts which exposes them, which is Guru Sadhu Shastra, और जब आप गुरु साधु शास्त्र के कागजात लेकर उनका सच्चाई बाहर निकालने का then you are प्रयास करते labeled हैं, a domestic terrorist. तो आपको घरेलू आतंकवादी का ठप्पा लगा दिया And then you will be labeled as a crazy person, और फिर आपको पागल व्यक्ति के रूप में जाना जाता है antisocial, और असामाजिक व्यक्ति के रूप में, or some kind of enemy to the, you know, the ultimate spiritual authority. या किसी तरह के शत्रु जो परम आधिकारिक समिति के ऊपर, And then everyone will be told, don't talk to that person, और सभी लोग कहेंगे कि उन व्यक्ति से बात मत करिए, because he's spreading some very dangerous information. क्योंकि वो कुछ बहुत ही खतरनाक जानकारी फैलाते हैं, And it is dangerous to them. और ये है उनके लिए खतरनाक, It's very dangerous to ये them. बहुत ही खतरनाक है उनके लिए। And then if you don't agree to sing this narrative, then you don't have a place in the temple. और अगर आप सहमत नहीं होते हैं उनके इस गीत को गाने के लिए, You're तो not, आप वो संस्था you're में not स्वीकार नहीं considered करते, part of the management or administration. आपको संस्था में व्यवस्थापक नहीं बनने दिया You're not जाएगा, respected as a senior devotee. आपको वरिष्ठ भक्त के रूप में सम्मान नहीं दिया You जाएगा, don't get all the benefits of the facilities of the temple and traveling within that society. तो आपको मंदिर की तरफ से कोई भी सुविधाएं यात्राएं करने के लिए You cannot सुविधाएं give नहीं, class, you cannot lead kirtans, आप क्लास नहीं दे सकते, आप you कीर्तन नहीं cannot गा have सकते, social relationships with anybody that is within that society. और उस संस्था में जो भी व्यक्ति मौजूद है उनके साथ किसी तरह का संबंध नहीं बना And सकते। then if you're really over the target, if you really have all of the facts, right, then all of them will get together
and they'll say, okay, this is our primary enemy. और अगर आपने सारे आपके सत्य बिल्कुल सही तरीके से आपने तैयार कर लिए हैं और अब आप उनका टारगेट है, तो सारे वो लोग एक साथ आपके खिलाफ आएंगे, क्योंकि उनके पास एक Because his information and his facts can totally expose us and damage us. क्योंकि इनकी जानकारी और इनके पास जो भी चीज़ें मौजूद है, ये हमारे सत्य को पूरी तरह से बाहर निकाल Then सकते हैं we'll lose our prestige, और हमारी प्रतिष्ठा चली and जाएगी we'll lose our followers, और हमारे अनुयायी and our भाग जाएंगे position and power, और हमारा शक्ति, हमारा temples, पद, हमारे and मंदिर, money, पैसा, and all of these gross and subtle types of benefits. जितने स्थूल या सूक्ष्म तरीके के लाभ So सुविधाएं for मिलती हैं, them, this truth is existential. तो उनके It's लिए completely dangerous to them. ये सत्य उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। That's why it has to be silenced. तो इसीलिए इसको शांत करने की जरूरत That's है। why these people are threatened to be killed, and even are sometimes threatened to be killed. और इसीलिए कभी-कभी इन लोगों को जान से मारने की धमकी दी जाती है या जान से मारने का प्रयास किया जाता है। Because look what, if it comes out and it's exposed, look what they have to lose. क्योंकि अगर ये सच बाहर आ जाएगा तो उनको वो सब कुछ खो सकते हैं। So this is like a full-on, this is what totalitarian regimes do. तो इस तरीके से जो लोग पूरा शासन बैठाना चाहते हैं, वो इस तरीके से It's करते हैं। exactly the same science. ये बिल्कुल वही विज्ञान है। They control the newspapers, they control the websites, they control the media. तो वो सारे अखबारों को, सारे न्यूज़ चैनल को और सभी जगह मीडिया को वो नियंत्रण They करते have हैं। seminars, and they have preaching programs, and they have indoctrination programs. तो वो सेमिनार करते हैं, प्रचार के कार्यक्रम लगाते हैं। They have formal types of initiations and public displays of your greatness for wanting to dedicate yourself to that mission. और फिर वो औपचारिक दीक्षा समारोह का आयोजन करते हैं और ये बड़े समारोह में ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये लोग कितने महान हैं और आपको इनका अपना जीवन If शरणागत you're करना a good चाहिए। soldier, then you'll get benefits, you'll get facility, you'll get opportunity for yourself and your family. अगर आप अच्छे सैनिक बनते हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। You just have to sell your soul. मूलतः आपको अपनी आत्मा बेचनी पड़ेगी वहाँ। Is this making sense? क्या इन बातों का मतलब बनता है? But It's almost like I went through all of this myself, isn't it? ऐसा इन सारे परिस्थिति से मैं स्वयं गुजरा हूँ। You think I learned this in the book? आपको लगता है ये सब मैंने किताबों में सीखा है? can't they present themselves like Nitya Siddhas with that philosophy also? Which They represent what? like Nitya Siddha. Can't they present themselves like Nitya Siddha with the original philosophy also, the real philosophy? How can they represent as Nitya Siddha? He's saying, can't they represent themselves as Nitya Siddhas just using the ordinary philosophy? Why do they have to bring in this fall-body philosophy? Well, where does the philosophy say that you're Nitya Siddha? तो वो कह रहे हैं कि वो सही सिद्धांत का इस्तेमाल करके ये साबित क्यों नहीं करते हैं कि वो नित्य सिद्ध है, उसका क्यों नहीं वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? तो गुरुदेव उत्तर दे रहे कहीं कोई सही सिद्धांत नहीं है जो उनको बता सके वो नित्य सिद्ध है। Maybe Krishna has sent them like Maybe is not scientific. like Srila Prabhupada. तो हो सकता है कृष्णा ने उन्हें भेजा हो, गुरुदेव बता रहे हैं। Quote हो सकता है scientifically, according to authority, Guru Sadhana Shastra, what can they use to substantiate that they're Nitya Siddha? What is their argument? तो गुरु साधु शास्त्र के कौन से भाग को इस्तेमाल करके वो ये साबित कर सकते हैं कि वो नित्य सिद्ध हैं? उनकी इसके प्रति कौन सी बहस वो सामने रखते हैं? Like if they can compare themselves with Srila Prabhupada also. How can you compare yourself with a Nitya Siddha? तो प्रभु कह रहे हैं वो लोग जो है प्रभुपाद के साथ अपनी तुलना करते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कैसे आप नित्य सिद्ध के साथ की तुलना कर सकते हैं? But if you're from India and I'm from America and I read some books about India, right? And I never went to India. Can you say that we both know India the same? तो आप अगर भारत से हैं और मैं अमेरिका से हूँ और मैंने भारत के बारे में कुछ केवल किताबें पढ़ी है, तो क्या हम दोनों ये बातें कह सकते हैं कि हम दोनों भारत के बारे में एक जैसा ही जानते हैं? If I've never been there?
जब मैं भारत में कभी रहा I've never गया ही नहीं, practically realized it. और मैंने कभी भी व्यवहारिक अनुभव नहीं किया उसका, What good is my academic, intellectual, so-called historic approach and understanding compared to someone who's from that place? तो मेरी जो शैक्षणिक या बौद्धिक स्तर पे जो मैं उसको मैंने समझने का प्रयास किया, उसके तक पहुंचने का प्रयास किया, वो कितना ज़्यादा व्यवहारिक होगा। So how can you compare it? It's incomparable. कैसे आप उसकी तुलना कर सकते हैं? ये तुलना करने योग्य नहीं है। The only way we can become siddha is kripa siddha. एक ही मात्र तरीका है जिसके माध्यम से सिद्ध बन सकते हैं, वो है कृपा सिद्ध। If you get mercy from Krishna, mercy from Nitya Siddha, by their mercy you can become kripa siddha. तो अगर आपको Because I received mercy from my spiritual master, he purified my intelligence, mind and senses, whereby then I could see, I got divine eyes and ears to be able to see and hear Krishna directly. और तब And all आप the credit goes to that, the previous acharya. और तब आप संजय की तरह कह पाएंगे कि मेरे गुरु की कृपा से उन्होंने मेरे मन और इंद्रियों को इतना शुद्ध किया कि मैं सीधे सीधे कृष्ण को सुन पाया, और ये सारा श्रेय पूर्व आचार्य को जाता है। So that's his credit. तो ये सारा श्रेय उनका है, It's not something we did. ऐसा नहीं जो कुछ हमने कर दिया। What did we realize before we got the mercy from that Nitya Siddha or from that Vaishnava? हम इन सारे चीजों को हमारा अनुभव नहीं था जब हम उनके Spiritually कृपा deaf, नहीं dumb थे। and blind. आध्यात्मिक रूप से हम अंधे, गूंगे और बहरे थे। So if your origin is spiritually deaf, dumb and blind, how do you compare that with an eternally liberated, representative and resident of Vaikuntha? तो आपकी शुरुआत हुई है आध्यात्मिक रूप से अंधे, गूंगे और बहरे के रूप में, तो कैसे आप उसको तुलना कर सकते हैं एक नित्य सिद्ध गोलोक वृंदावन के वासी से? How do you compare that? कैसे आप इसकी You तुलना cannot कर compare पाते? that. ये तुलना नहीं की जा सकती। So because there is difference in Srila Prabhupada and these people, so because there is difference in the consciousness of the so-called gurus, present gurus, and the Srila Prabhupada. So now they are trying to compensate. Heaven and hell difference. Yeah. प्रभु कह रहे हैं कि अभी वर्तमान के गुरु और श्रील प्रभुपाद की चेतना में अंतर है, तो गुरुदेव बता रहे हैं स्वर्ग और नरक का अंतर है दोनों It's में। not even close नजदीक भी नहीं है, to even compare. Has to be close to even compare, isn't it? तुलना भी की जा सकती, तुलना के लिए कम से कम नजदीक होना चाहिए। So if they're on the highest level of tattva vijnanam, and you're on the three-dimensional false ego platform of theoretical understanding with your jnana, you're comparing three-dimensional, kind of bots with eternal Swarup Shakti manifestations of the Lord's, devotees, Vaishnava, तो अगर आप Nitya Siddha. जो तत्व विज्ञान में सर्वोत्तम सिद्धि के स्तर पे हैं, और आप जो हैं भौतिक आयाम में, 3 आयामों के स्तर में हैं, और आप दोनों के बीच में अगर तुलना कर रहे हैं, जो कि एक तरह से रोबोट हैं, और जो ऊपर वो जो है शुद्ध भक्त हैं उनके बीच में, So they're actually dead. तो असल में ये लोग मरे हुए हैं। The soul is not awakened. तो जो आत्मा अभी तक जागी भी नहीं है, Just their intellect and senses are somehow agitated. इस तरह से बुद्धि और इंद्रिय जो है कुछ कर रही है, That's not on soul platform. तो वो आत्मा का स्तर नहीं है। They're just on a theoretical, intellectual, mental, speculative platform. तो वो केवल मौखिक बुद्धि के स्तर पे और मनोधर्म के स्तर So पे। how can we compare that with the self-realized soul who is completely inside and out on a Swarup Shakti platform? तो कैसे हम किसी ऐसे की तुलना कर सकते हैं जो स्वरूप शक्ति के अंतर्गत उस स्थान में नित्य सिद्ध है? So you could say like 1% is the soul and 99% is your body and your mind. Okay, there's 1% is your soul. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 1% जो आत्मा है और 99% जो है शरीर और मन है। And Prabhupada says 99% of the people here, all they know is their body and their mind. प्रभुपाद बताते हैं 99.9% लोग जो यहाँ हैं वो केवल अपने शरीर और मन को जानते हैं। Okay, and then you're going to compare that with personalities who are 100%, Swarup Shakti.
और आप इन लोगों की तुलना उनसे करना चाहते हैं जो 100% स्वरूप शक्ति में स्थित है। So how can you even think that you can compare that? तो आप सोच भी कैसे सकते हैं कि उनकी तुलना भी की जा सकती है? So because they know that people are able to notice their degraded position. They know what? Their degraded position as gurus. They know? People are able to notice this, that they are not like Prabhupada. So How do AI bots, they don't have any brain, they don't have any soul, they don't have any spiritual intelligence, they're just like machines, they're like, just, how do you call it? Like, Zombies. not zombie, he's a zombie, not quite zombie, but just like dogmatic, what is this word, where you're just blindly following? sheep. Like a fanatic. You're just like a materialistically fanatic person. So that just shows your disqualification. That's why it says majority of the people here is the cheated and the cheaters. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं ज़्यादातर ये एक मशीन की तरह हैं जिनका वो पूरी तरह से अंधे होकर बस पालन कर रहे हैं और उनके पास आत्मा उनकी जागृत नहीं है, तो कैसे उनकी तुलना नित्य सिद्धों से की जा सकती है? Gurudev, I am not able to frame the question properly, but I just want to, please can you repeat how they are trying to take the advantage of the fabricated philosophy? I'm trying to understand you. Because you're presenting their argument, right? And I'm just showing you step by step how this type of, so-called logical, materialistic presentation, it's not even materially logical or intelligent. What to speak of, spiritually, scientifically realized. So even from a material point of view, it makes no sense, no common sense, no logical sense. It's totally disconnected, even materially. What to speak of transcendentally. तो प्रभु कह रहे हैं मैं अपने प्रश्न को सही तरीके से नहीं रख पा रहा हूँ, तो क्या आप फिर से विवरण दे सकते हैं कि कैसे वो लोग गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को साबित करने के लिए कि वो नित्य सिद्ध हैं? तो गुरुदेव बता रहे हैं मैं आपको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जिस तरह के बहस और तर्क जो भौतिक दृष्टिकोण से या तार्किक दृष्टिकोण से रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसका भी सही अर्थ नहीं बन पा रहा है। So you were saying that that there's some basis by which they can substantiate their nitya siddhaness. तो आप बता रहे हैं कुछ ऐसी बहस देने का प्रयास कर रहे हैं जिसका वो इस्तेमाल करते हैं खुद को ये दिखाने के लिए कि वो नित्य सिद्ध हैं। So what is that basis philosophically according to Guru Sadhu Shastra? तो उनका क्या आधार है गुरु साधु शास्त्र के आधार पे अपनी बात को रखने के लिए? That's what I am asking you, that how they are trying to present it like this. How are they trying to do that? That they are with siddhas by using the duplicate. Because what are they saying, right? We all came from that place, right? And they're all most advanced, highest spiritual authorities. They're all posing and pretending that they're, on the Gopi Bab platform or in the Raganuga platform. They're reading all Goswami literatures. They're getting gyan. They're not presenting Prabhupada's books and teachings. They're all talking about the different Goswami books and literatures. Right? Then privately, they're all acting and practicing like they think that they're doing this Raganuga practice in front of their ignorant disciples. So they're trying to project to those people that they're on that platform. This is not saying that they're trying to, present and promote themselves, that they're coming from that platform, they're on that platform, and that substantiates why they are your spiritual authority and why are they your gurus and why you should blindly follow whatever they say, isn't it? तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं खुद को ये दिखाने के लिए कि वो नित्य सिद्ध हैं और उनके बराबर हैं,
तो गुरुदेव बता रहे हैं कि जिस तरीके से वो बातें करते हैं उसके माध्यम से वो कहते हैं कि वो आध्यात्मिक जगत से गिरे हैं और वो सर्वोत्तम अधिकारी हैं और बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं और गोपी के भाव में है, विरह के भाव में है और गुप्त तरीके से ऐसे अज्ञानी अनुयायियों के सामने रागानुगा भक्ति दिखाने का प्रयास करते हैं। इन सारी गतिविधियों से लोगों को ये ठगने का प्रयास कर रहे हैं कि वो भी उस नित्य सिद्ध के स्तर पे हैं। I'm connecting all of the dots for you. तो मैं सारे बिंदुओं को आपके लिए जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। There's a bigger picture going on here. यहाँ पे एक बड़ी It's all तस्वीर connected. दिखाई जा रही है और ये सारे बिंदु आपस में जुड़े हुए हैं। So how is it going well with their philosophy? How what? How is it all what you have explained that they are like posing? So how is it going well with the philosophy? How they're able to trick these people into believing Because they're unfortunate and they have no knowledge. They have no proper training and इनके पास intelligence. ज्ञान की कमी है, प्रशिक्षण की कमी है, इनके पास ये ज्ञान नहीं है कैसे इन सारी चीज़ों को पता लगाया जा सकता है सही तरीके से। How we will be able to immediately detect them that they are posing if we You believe in the- cannot because you're posing. तो वो पूछ रहे हैं कि कैसे हम ये पता लगा पाएंगे कि वो लोग दिखावा या नाटक कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप भी दिखावा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। So first you have to become not deaf, dumb and blind तो पहले खुद आपको अंधा गूंगा बहरा नहीं बनना by होगा। the mercy of Guru and Krishna. गुरु और कृष्ण की कृपा से Then you'll get your spiritual intelligence, mind and senses back. और तब आपको आपके आध्यात्मिक बुद्धि इंद्रिय And then मन you'll be वापस given the foundations of Tattva Vichar according to Guru, Sadhu and Shastra. और तत्व विचार की नींव आपके ऊपर बैठाई जाएगी गुरु साधु शास्त्र के आधार पे। And then the books and teachings will be the measuring instrument to be able to then look out into the world and try to analyze and understand anything in anyone based on that foundation. और फिर वो किताबें और शिक्षाएं आपको मदद करेगी बाहरी किसी भी चीज को देखने के लिए, न्याय कर पाने के लिए और निर्णय कर पाने के लिए। Otherwise, what will you say? What will you measure? आप क्या देखेंगे और क्या मापेंगे? How will you come to some conclusion? कैसे आप किसी निष्कर्ष तक What are पहुंच your पाएंगे? measuring instruments? आपके मापने के उपकरण क्या हैं? How can you learn by the reactions of that process if you're not even conscious enough about the reactions and how to understand and read those reactions? तो इस प्रक्रिया में आपको जो जो प्रभाव दिखेंगे और उसको आप पढ़ पाने के लिए योग्य नहीं है तो कैसे आप इस प्रक्रिया का लाभ उठा पाएंगे? All you have to do is if you're trying to explain all of this to you, to qualify you, by the mercy of Krishna, one gets a guru. By the mercy of that guru, then you can get Krishna. तो आप एक चीज एक निष्ठा से जानने का प्रयास कर रहे हैं और कृष्ण इस बात को जानते हैं तो कृष्ण आपके लिए एक ऐसी व्यवस्था करेंगे, आपको योग्य बनाएंगे, आपको शुद्ध बनाएंगे ताकि आप इस प्रक्रिया का लाभ उठा के इसको जान सकें। कृष्ण की कृपा से आपको गुरु मिलेंगे और गुरु की कृपा से आपको कृष्ण। Why aren't they teaching this information? तो ये जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं वो? Yeah, but I'm just asking you that, like you told us that because they are so much stubborn with this philosophy, because they want to keep their position as gurus. So if we will accept the My original point is, philosophy- if they're not presenting Krishna, Guru, Sadhu and Shastra properly, why is that? How is that? And what is the motivation for ignoring the truth? What are the possible motivations for them to ignore the process and the truth as it is? That's what we're analyzing. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि कैसे वो ये तरीका है जिसे हम समझ पाएं और तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति गुरु साधु शास्त्र प्रस्तुत नहीं कर रहा है तो प्रश्न ये है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है और कैसे ऐसा है और क्यों वो इस प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहा है और क्यों वो लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा है कुछ अन्य चीज़ों को देखकर। उसका उद्देश्य क्या है भीतरी? means if they will even if they don't accept Guru, Sadhu and Shastra, Then they should be rejected. they should be rejected, but according to their philosophy, they are right. Like that, I want to without Guru, Sadhu and Shastra. If they want to follow Maya and Maya's influence, they can do whatever they want. But the question is,
are you accepting their Maya as the truth, so much so that it influences you to do what they're doing? That's the question. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि वो अपने इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं वो दिखाने के लिए कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और गुरु साधु शास्त्र को स्वीकार नहीं करते हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं आप गुरु साधु शास्त्र को क्यों स्वीकार नहीं करते और वो जो माया प्रस्तुत कर रहे हैं आप उनसे क्यों प्रभावित हो रहे हैं, क्या आप वो भी करना चाहते हैं? I'm not influenced by them actually. I believe what you already explained yesterday. I'm trying to understand the nature of your question. They know it's Maya? Do they know it's Maya? तो मैं आपसे ये सवाल Or do पूछ रहा you हूँ, think that they're thinking that this is the absolute truth? तो आपको पता है कि वो लोग समझ पा रहे हैं कि वो जो पालन कर रहे हैं वो माया है या नहीं, या फिर आप ये सोचते हैं? I'm asking you. तो प्रभु कह रहे हैं ये सवाल मैं आपसे पूछने वाला था, गुरुदेव कह रहे हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ। Like actually I wanted to know that although I know that this is the correct philosophy according to Guru Sadhu and Shastra, but how it is connected with the Guru issue, that actually I am not able to understand. How what? What's say again? Although Ashutosh, you understand? Yeah, he's saying that like this Jiva Tattva, Yeah. what you explained, that I agree with, but I am not able to understand how what they are presenting is connected with Guru issue. How are they saying themselves? How are they saying themselves that they are Nitya Siddha? They are not Nitya Siddha. Even if what they are assuming right now, according to that also they can consider that they are Nitya Siddha. Correct? So you don't understand how if you're saying that we all came from Goloka Vrindavan, that means that what, we're all Nitya Siddhas? तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे जो जीव तत्व के विषय में आपने ये बातें समझाई, मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन ये बाकी जो ये सारी बातें हैं ये गुरु इशू से कैसे संबंधित है ये मैं समझने का प्रयास कर रहा था। तो गुरुदेव बता रहे हैं वो लोग ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो सभी नित्य सिद्ध हैं, और हम इसका मतलब हम क्या सभी हम नित्य सिद्ध हैं? So Nitya Siddha, Prabhupada explains Nitya Siddha means he's descending directly, just like Krishna descends from Krishna Golok Vrindavan to sense. He's never contaminated by this material energy. Yeah. He never, even he's like the lotus, right, in the muddy water. But he's never muddied. He's never contaminated or influenced or bewildered by under the modes of material nature. So such Vaishnava Nitya Siddhas, Prabhupada describes that they're born in the family of pure Vaishnavas. And that never was there, Prabhupada directly says, never was there a moment in time in their life that they ever did not think about Krishna. So Prabhupada's very definition of Nitya Siddha, right, does not fit this idea that we all were with Krishna, we were all having an eternal loving relationship with Radha and Krishna, we all fell from, Vaikuntha, we all fell from Goloka Vrindavan, from Krishna's planet. तो जिस तरीके से गुरुदेव ने बताया कि जैसे कृष्णा अवतरित होते हैं यहाँ पे, उसी तरह नित्य सिद्ध भी यहाँ पर अवतरित होते हैं। तो जैसे कृष्णा भौतिक प्रकृति के किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होते हैं, उसके कलवश में नहीं आते हैं, उसी तरह भगवान के भक्त भी नहीं। जैसे कमल जो है वो कीचड़ में रहता है, लेकिन वो कीचड़ से अछूता रहता है, वो जल में नहीं रहता, उसी तरह से ये भक्त भी रहते हैं। तो प्रभुपाद ने जैसे नित्य सिद्ध का परिभाषा दी है कि उनका जन्म शुद्ध वैष्णव के परिवार में होता है और जिंदगी के जीवन के किसी भी एक क्षण भी वो कृष्ण को भूलते नहीं हैं। तो ये जो उन्होंने उदाहरण दिया है और उन्होंने जो बताया, तो कैसे दोनों को तुलना की जा सकती है प्रभुपाद के साथ? So are they not trying to establish that they are eternal loving relationships and coming from Radha and Krishna in Goloka Vrindavan? Is that not the purpose of why they're saying we're from that place? तो क्या वो इस बात को स्थापित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि वो भी नित्य सिद्ध है, राधा कृष्ण के साथ उनका नित्य संबंध है और गोलोक वृंदावन से वो यहाँ गिरे हैं, इस बात को सबके सामने स्थापित करना चाहते हैं? Then in this way they will include us also like Nitya Siddha. Then what is the difference between them and us? So according to them, now all the people who are sitting in audience, everybody else also are Nitya Siddhas. So they're all bewildered if they're thinking like that. They're all in ignorance of the truth, right?
तो उनके परिभाषा के आधार पे इसका मतलब हम सभी नित्य सिद्ध हैं। तो इसका मतलब वो जिस तरह का ये प्रचार कर रहे हैं, इसे सभी लोग जो मौजूद हैं, सभी लोग उससे भ्रमित हैं और सभी लोग उससे प्रभावित हैं। So then they use their authority in the institution. तो उसके बाद क्या इस्तेमाल करते हैं? वो अपने अधिकार को, Prabhupada disciple, अधिकार पाया कि वो प्रभुपाद के the शिष्य हैं, temple president, वो मंदिर के the प्रसिद्ध हैं, senior वो devotee. वरिष्ठ भक्त हैं, They have all of the positions of power, money, control, influence. उनके पास सारा स्थान और शक्ति, They're नियंत्रण, sannyasis, they're वो GBCs. सन्यासी हैं, जीबीसी हैं। Right? So then they use all the externals, which are all superior to the ordinary Nitya Siddha. तो ये जो बाहरी चीजें हैं जो सामान्य नित्य सिद्धों के पास नहीं है और उनके पास है, तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं। उनसे So खुद they're को ऊंचा still दिखाने better के लिए। than you. अभी भी वो So आप you लोगों से still have बेहतर to हैं। surrender. अब इसका मतलब अभी भी आप लोगों को उनको शरणागत करने की जरूरत है। That's why I said in Bangalore, right? If we're all God brothers, right? Then why we have to accept that guy as the guru? तो इसलिए हमने बेंगलोर में कहा कि अगर ये सभी गुरु भाई हैं, तो हमें उनको क्यों गुरु के रूप में स्वीकार Because he's करना got the चाहिए? brain, he's got the connections, he's got the buildings, he's got the cash, he's getting everybody, you know, all type of material facility and enjoyment. Yeah, he wants to be the guru. I'll say he's a guru. क्योंकि उनके पास सारी बुद्धि है, उनका संबंध है, उनके पास बिल्डिंग है, उनके पास पैसा है और मंदिर के अंदर सारी सुविधाएं वो दे सकते हैं। अवश्य मैं उनको गुरु मानने के लिए तैयार हूँ। That's why I say you have to take all these dots and you have to be able to connect it. तो इसलिए मैंने कहा आपको सारे इन बिंदुओं को देखने की जरूरत है और आपको योग्य होना है इन सारों को जोड़ने के लिए। Then you'll come to a right conclusion. और तब आप सही निष्कर्ष तक पहुँच पाएंगे। And you can do that on your own, और अगर आप ये खुद से कर पा रहे or हैं, you can do that by considering other persons who have already understood all of that. या फिर आप उन व्यक्ति के आधार पे इसको विचार करने का प्रयास कर रहे हैं जो पहले इन सारी बातों को समझते हैं। And then if you consider the presentation and you try to understand how those dots are all connected and how it's all related, then you can take which part of that makes sense to you and which part of it is logical and according to the Guru Sadhu and Shastra that you can use for your own experiment. और फिर अगर आप इन सारे बिंदुओं को जोड़कर देख पा रहे हैं, विचार कर पा रहे हैं, तब बस आपको यही देखने की जरूरत है इनमें से कौन सा भाग आपके लिए लाभकारी था, आपको फायदा दिया और आप इनमें से किसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। Because it's all in Prabhupada's books and teachings. Why are they not? Why is it so militantly, you know, enforced that this discussion cannot be done inside of ISKCON? So that's what I'm looking at. Why are they so adamant and so determined and so systematically controlling that narrative? What can possibly be their motivation for that? तो मैं ये सोचने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रभुपाद की शिक्षाओं में बहुत ही साफ तरीके से बताया गया है, लेकिन क्यों वो पूरी तरह से नियंत्रण में लाके इस संदेश को लोगों तक से पहुँचने के रोकने का प्रयास कर रहे हैं? उनका यह भीतरी उद्देश्य क्या है ये लोगों तक नहीं पहुँचने देने के लिए? So, if everybody is Nitya Siddha, then how can somebody accept someone as a guru simply because he's Prabhupada? Is not correct. Because you're basing that everyone's a Nitya Siddha, that's automatically correct. So the basis of your question is faulty. तो प्रभु सवाल I'm assuming it just to get the answer. Huh? I'm just assuming that my question to them actually, but I want to answer from you that if everybody is Nitya Siddha, then why should I accept you Guru simply because you are Prabhupada disciple or you are having money? Do you want an Apar-vichar answer or a Tattva-vichar answer? Tattva-vichar. You want Tattva-vichar answer? They'll say, because even in the spiritual world, there is a hierarchy from Srimati Radharani and the gopis. So even there, although it's absolute, you still have to come under some authority. So that's why you have to learn that here in the material experience of being a Nitya Siddha. That would be a Tattva-vichar type of
Of course, Tattvacha means pure honesty, so they can't really, but they can manipulate that type of an answer. Otherwise, why are we accepting you as any kind of an authority? Then materially, it's like, it's like we're all, how do you say, uttamadikari, like everyone is a soul, everyone is eternal servant of Krishna, everybody is equal, right? So there's no hierarchy, it's all the same, we're all the same. Right? So you have to build some hierarchy in order to take that position, to take that control. And so all they're doing is extrapolating from the spiritual realm something that can be materially, logically manipulated into some type of a justification for them to manipulate your behavior according to that narrative. Does that make sense? I got my answer. तो वो प्रभु का प्रश्न है कि जब सभी लोग नित्य सिद्ध हैं तो क्यों किसी को केवल इस बात पे गुरु ग्रहण करना चाहिए कि वो प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो गुरुदेव ने कहा आप तत्व विचार उत्तर चाहते हैं या पार विचार, तो उन्होंने कहा मैं तत्व विचार उत्तर चाहता हूँ। तो उनका जो बहस है वो इस तरीके से देते हैं कि जैसे आध्यात्मिक जगत में भी अलग अलग स्तर है, कोई श्रीमती राधा रानी के अंदर, फिर उनके नीचे इस तरह से एक अलग नीचे स्तर चलता आता है, तो उसी तरह भौतिक जगत में भी आप लोगों को इस तरह का एक स्तर को पालन करने की ज़रूरत है ताकि आप यहाँ नित्य सिद्ध बनने का अभ्यास कर सकें और उसी को आप आध्यात्मिक जगत में जाकर कर सकें। Or like in Guru Leela, they could say, well, the 6 Goswamis, after Mahaprabhu, Jiva Goswami and Rupa Goswami, they accepted Sanatana Goswami as the Acharya after Mahaprabhu left, right? So then, although they're all Manjaris, although they're eternal servants of Radha and Krishna, they all agreed to serve within that hierarchy in following Sanatana Goswami, although they're all eternally liberated Manjaris. तो वो ये भी बहस देने का प्रयास कर सकते हैं जैसे महाप्रभु की लीला में महाप्रभु के जाने के बाद सभी गोस्वामी ने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को गुरु के रूप में स्वीकार किया, यहाँ तक कि सभी लोग नित्य सिद्ध और मंजरी थे, तो वो इस बहस को भी देने का प्रयास करते हैं। So in every leela there is some hierarchy. हर लीला में कोई ना कोई एक So you can नीचे pick any का leela से you ऊपर want, तक then स्तर you है। would find a hierarchy. तो कोई भी लीला आप चुनेंगे वहाँ पे आपको ये आपको ऊंचे से नीचे Now, तक का स्तर whether दिखाई it's spiritual and absolute, or whether it is trying to be manipulated, in the material realm, and posed as spiritual and absolute, that's the distinction that we're trying to make here. तो वो आध्यात्मिक स्तर में उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं परम सत्य के स्तर पे, या भौतिक स्तर में उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाहरी रूप से केवल आध्यात्मिक, भीतरी रूप से नहीं। And why, if someone is Nitya Siddha, why he need Guru? If everybody is Nitya Siddha, Krishna, Mahaprabhu, right? Everybody accepts a guru, right? So Krishna and all the servants of Mahaprabhu, right? They all accepted guru. So what's your problem? If the Lord and all his devotees accepted a guru, even though you're Nitya Siddha, why shouldn't you accept a guru? And since you need to set an example, then I'll be your guru. प्रभु कह रहे हैं कि They are, right? The more difficult it is to persuade them, right? जितने ज़्यादा जटिल होते हैं उनको आश्वस्त करना उतना ज़्यादा कठिन होने लगता है। What's your complication for not accepting? आपकी क्या जटिलता है ऐसा नहीं स्वीकार करने के लिए? if everybody is a Nitya Siddha, and I hate your premise, man. It's like a rasa bas. It's like a painful. आप जो आधार जिस आधार पे तर्क बहस शुरू कर रहे हैं, ये आधार ही पूरी तरह से गलतियों से भरा है, इसको ये It's रसाभास है, it's like इसमें calling दर्द हो रहा है। the hogs like brahmanas. जैसे आप सुअर को ब्राह्मण कह रहे हैं, ये आप कहने का प्रयास कर रहे Right? It's like a painful. हैं। दर्द हो रहा है सुनकर। There's like no suitable analogy or it's anyway. अब सही जो सही So तरीके is से this so प्रस्तुत you करने का can प्रयास go नहीं preach कर to रहे हैं। them? Is that why you need all this information? You need all this ammunition? You're going to go preach to the तो आप सारा गोला बारूद यहाँ से लेके जाना to चाहते the हैं, इसको प्रचार करने के other लिए। Nitya Siddhas? दूसरे नित्य सिद्धों को।
He's going to go and convince them why those Nitya Siddhas have to accept him as a guru. ये असल में ये करना चाहते हैं, उन लोगों को ये साबित करना चाहते हैं क्योंकि उन नित्य सिद्ध को इनको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। Because if he shows up with better information, right, then they have to surrender to him. तो अगर ये बेहतर जानकारी लेकर वहाँ जाएंगे तो सभी को इनको शरणागत करना पड़ेगा। So he wants to be the guru. तो ये गुरु बनना चाहते हैं। He's making everyone work, isn't it? ये सबको मेहनत करा रहे हैं। He's really making us burn energy, you know? हमारी गर्मी बढ़ा रहे हैं। Personally, we can discuss. Huh? Personally, we can discuss. And one to You'll take a private darshan with you to continue this. I don't want to talk about कह रहे हैं हम अकेले में बातचीत कर सकते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, I'm मैं telling इसके you बारे में all, बात so I नहीं करना never चाहता। have to. So I never have to have this conversation with anyone ever again in मैं my खुल के life. सबके सामने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं किसी के साथ भी ये बातचीत नहीं करना चाहता कभी भी। I'm just trying to clear. If anyone even thinks about coming to me with this kind of a discussion, here's your answer. Listen to this tape again and again until you understand it. Don't bother my head, you know. अगर किसी के मन में ये विचार भी आता है ये इस बात मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं तो सोचिएगा तक मत कि और इस टेप को बार-बार सुनते रहिएगा। My question is that if Why are you unnecessarily complicating it? आप जरूरत से ज्यादा क्यों जटिल बना रहे हैं? Are you just enjoying like the mental gymnastics, or is there some kind of? Are you just enjoying playing up on the, you know, the mental intellectual platform? Is it exciting for you? क्या आप मजा ले रहे हैं अपने दिमागी कसरत का? आपको बहुत अच्छा लग रहा है? let me ask one question. Okay, one more. ठीक है, एक और प्रश्न पूछ सकते हैं आप। Since we're all Nitya Siddhas, क्योंकि हम सभी नित्य सिद्ध हैं। Like even Chaitanya Mahaprabhu also accepts Guru, but actually Guru is meant for a fallen disciple, fallen person, fallen jiva. Although they are playing the part, Chaitanya Mahaprabhu also. then why does Krishna say that he accepts Srimati Radharani as his guru? तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि महाप्रभु और उनकी लीलाओं में ये दिखाया जा रहा है कि बद्ध जीवों के लिए गुरु स्वीकार करना जरूरी है। तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, तो श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी मेरे गुरु हैं? If she makes me to dance, then I dance because she is my guru. तो अगर वो मुझे नचाना चाहती है तो मुझे नचाती हैं She क्योंकि is वो the मेरी गुरु हैं। master, and she's controlling me by her love and devotion. तो वो मेरी स्वामिनी है और वो मुझे नियंत्रण कर रही है अपने प्रेम से। So अपनी that भक्ति से। question not correct, that there's only concept of guru is in the material realm. तो आपका ये विचारधारा बहुत गलत है कि गुरु का And everybody who's worshipping Srimati Radharani and all of her intimate associates, they're all accepting the higher authorities as their guru. तो श्रीमती राधा रानी और उनके जितने नित्य पार्षद वो सदैव इस पूजा में लगे हैं, वो भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह वहाँ भी एक ऊंचे से नीचे तक का एक स्तर है। It said we're eternal servants of our spiritual master. ऐसा कहते हैं कि हम नित्य सेवक हैं अपने आध्यात्मिक गुरु So we're eternally the servant and the guru is eternally our guru. तो हम नित्य गुरु के दास हैं और गुरु हमारे नित्य गुरु हैं। So if everybody is Nitya Siddha and even in the spiritual world gurus are there, then this is also spiritual world. It feels like that. What they are trying to present. Then go live in their spiritual world. तो वो कह रहे हैं कि अगर आध्यात्मिक जगत में भी इसी तरह से लोग गुरु स्वीकार करते हैं, भौतिक जगत में भी ऐसा ही है, तो दोनों आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच कोई अंतर नहीं है। तो गुरुदेव बता रहे हैं आप उनके आध्यात्मिक जगत में रहिए फिर। It's like going with the drunkards, you know, out in the park, right? They're like, what a life we have, you know. जैसे जो है आप नशेड़ियों के साथ जा रहे हैं बगीचे में और कह रहे हैं बहुत अच्छा जीवन We है। just drink alcohol and roll and laugh and joke around. Such a wonderful life we have, you know. हम बस दारू पीते हैं, हंसते हैं, गुलटते हैं, क्या अद्भुत जीवन है हमारा। These other people have to go to work and they have to work a job and they have so much बाकी लोग rules, जो है regulations, responsibility. नौकरी करने जाते हैं, कितना मेहनत करनी पड़ती है, इनको बहुत सारे इनके ऊपर We're जिम्मेदारियां free. हैं। हम तो पूरे आजाद हैं। I mean, what they are assuming? They are assuming that they are in the spiritual world. You're saying they're in the spiritual world.
No, because कौन कह रहा है कि वो आध्यात्मिक जगत? आप ऐसा मान रहे हैं कि वो आध्यात्मिक जगत? Huh? because everybody is Nitya Siddha and Guru is also in a spiritual world. So it is Are they in the spiritual world? No. तो कह रहे हैं कि सभी So who's saying they're in the spiritual world? और गुरु आध्यात्मिक जगत में है। हाँ? क्या वो आध्यात्मिक जगत में Philosophy है? is like this. According to their philosophy, they feel that they are all in the spiritual world. Now it appears like. So let them think whatever they want to think. वो कह रहे हैं कि वो ऐसा सोचते हैं उनके सिद्धांत के अनुसार कि वो सभी आध्यात्मिक जगत में हैं। तो वो कह रहे हैं उनको जो सोचना है उनको सोचने देते हैं। Like why bother your head? अब अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं? If you know it's not the spiritual world, right, and they want to be insane, आपको पता है कि वो आध्यात्मिक जगत नहीं है और then वो who पागल है, cares? तो किसे फर्क पड़ता है? The only thing you have to figure out is I don't want to be insane with them. आपको बस एक ही पता लगानी है कि मैं उनके साथ पागल नहीं रहना चाहता। What's the complication? क्या जटिलता है? It's almost like you're being persuaded by their arguments, you know what I mean? ऐसा लग रहा है कि आप उनके बहस से संतुष्ट हो रहे हैं। So maybe you should go live in the spiritual world with them. हो सकता है आपके साथ आपको उन लोगों के साथ उनके आध्यात्मिक जगत में रहकर रहना Either चाहिए। you become their guru or they become your guru. That's between you guys, you know? और या वो लोग आपके गुरु बने या आप उनके गुरु बने, आप लोग आपस में निर्धारित कीजिए। Everybody knows that this is not a spiritual world, this is material world. But according to their philosophy, it is coming Who out. cares about these people? कह रहे हैं कि सभी को पता है ये भौतिक जगत है, लेकिन उनके सिद्धांत के अनुसार ऐसा लग रहा है कि आध्यात्मिक जगत। गुरुदेव बता रहे हैं वो क्या सोचते हैं, किसको फर्क पड़ता है? The hogs are thinking that we're a bunch of idiots. तो जो सुअर है वो सोच रहे हैं कि वो बहुत They don't realize the humans don't know how much nice food we have here, you know? वो ऐसा सोचते हैं कि ये मनुष्य को पता नहीं हम कितना अच्छा खाना खाते हैं। Who cares what the hogs think? किसे फर्क पड़ता है कि सुअर क्या सोचता है? We're just establishing that they're insane. हम बस ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग And it's पागल not authorized and it's not according to Guru Sadhu and हैं Shastra. और वो सही नहीं है। गुरु साधु That's शास्त्र all के we're आधार पे doing. नहीं है। हम ये We're करने just का प्रयास कर exposing रहे हैं। it as an insane asylum. तो हम उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये एक पागल खाना है। And some who are in it will realize it when they hear the truth that yes, this is insane and get out of that. और जो लोग यहाँ मौजूद हैं हम उनको ये साक्षात्कार कराने का प्रयास करें और तब वो यहाँ से बाहर निकलने का Otherwise, प्रयास you cannot preach to those people. करें। वरना आप इन लोगों को प्रचार नहीं कर सकते। This is not for them. ये उनके लिए नहीं है। These are for innocent people who may be persuaded by them or caught up by them. तो ये उन नादान लोगों के लिए है जो हो सकता है उनके इस प्रस्ताव से संतुष्ट हो गए या In उनसे order प्रभावित हो to गए। extricate them, in order to release them, free them from that. तो उनको वहाँ से मुक्त करने के लिए, वहाँ से बाहर निकालने के लिए ये हमारी प्रस्तुति है। And the best thing to do is you have to bring the truth and the reality, you have to show that, and then now you can see what is the difference. और सबसे श्रेष्ठ चीज जो आप कर सकते हैं सत्य या सच्चाई को उनके सामने रखिए और उनके पास सबसे सही तरीका होगा भेद पता लगाने का। Before that, if you have no reality, then how do you compare it? What are they doing? तो इससे पहले अगर आपके पास भी सत्य नहीं है तो आप उनको ऐसा कुछ नहीं दे सकते जो पता लगा As पाए, compared या to अंतर लगा what? पाए। तो वो किससे तुलना करेंगे फिर? Then you'll be like, maybe that is true. तो फिर आप सोचेंगे कि हो सकता है वो कह रहे हैं Maybe I'm misunderstanding something. हो सकता है मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ Because you're not rooted in the absolute truth, then you'll be persuaded. क्योंकि आपका जड़ भी परम सत्य पे आधारित नहीं है तो आप भी उनके द्वारा प्रभावित हो And that's जाएंगे why it's so dangerous. और इसीलिए इतना खतरनाक है। So do they know that they are actually like a demon or they are in Who illusion? cares what they know or they don't know? प्रभु जी क्या उनको पता है कि वो ऐसे असुर हैं? गुरुदेव कह रहे हैं किसको फर्क पड़ता है उन्हें पता है या नहीं पता। It's like someone's a demon and you're like, how much of a demon are you? जैसे कोई असुर है आप उनको जान कहते हैं आपको पता है आप कितने कैसे असुर हैं? Are you like 100% demon? Are you like a powerful demon? क्या आप Are you 100% a असुर new हैं? demon? क्या आप शक्तिशाली असुर हैं? क्या आप नए असुर हैं? Who cares? किसे फर्क पड़ता है? It's like it's a useless speculation. एक फालतू मनोधर्म है। We're supposed to, be smart in our philosophical speculation. हमें अपने सैद्धांतिक मनोधर्म में थोड़ा सा बुद्धिमान होना चाहिए।
then that at least leads you to, tattva vichar. तो कम से कम आप तत्व विचार की तरफ आगे बढ़ But सकते just हैं। using some type of intellectual mental speculation to analyze, what type of stool are they eating? हम बस अपनी बुद्धि और मनोधर्म का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए कर रहे हैं कि किस तरह का विष्टा ये खाते हैं। What quality of metals is in the quality of stool that they're eating? किस किस How तरह much का रस iron और is there? How much copper is there? किस गुणवत्ता का वो विष्टा का है, कितना उसमें कॉपर है, तांबा है। It's stool, Baba. ये विष्टा है वो। Who cares what quality of stool it is? किसको फर्क पड़ता है कि किस गुणवत्ता का वो विष्टा है? It's still stool. अभी भी ये विष्टा ही है। Now we just have to understand the difference between nectar and stool. हमें केवल अंतर ये देखना है कि अमृत और विष्टा के बीच में क्या अंतर है। Right? So if all you know is stool, then you'll be into analyzing qualities of stool, right? अगर आप केवल विष्टा जानते हैं तो आप केवल विष्टा अलग-अलग विष्टा के बीच में अंतर देखने का प्रयास Then you'll be करें। like, I'm looking for the best quality of stool. आप कहेंगे मैं सबसे श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले विष्टा को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। Right? If you get nectar, then you don't care the different qualities of stool. अगर आपको अमृत मिल जाएगा तो अलग-अलग तरह के जो विष्टा होते हैं आप उसके बारे में चिंता ही नहीं करेंगे। Doesn't matter. कोई फर्क ही नहीं Then पड़ता। you're out of that analysis business completely. वो जो आकलन करने के आप व्यापार से बाहर निकल Now जाते you're talking about how to chase nectar हैं। अब आपको ये पता लगाना है कैसे आप अमृत के पीछे जा सकते and हैं how to get more and more of that. और कैसे उसका और ज़्यादा आप पा सकते हैं। It's like you're eating nectar, right? And then you're like, I wonder how those hogs are eating that stool, जैसे कि आप अमृत खा रहे हैं और आप चिंता करना शुरू करते हैं कि मैं सोच रहा हूँ ये जो सुअर है ये विष्टा के अंदर क्या मजा ले रहे हैं। Are they liking when they're eating that stool? क्या उनको अच्छा लगता है जब वो विष्टा खाते हैं। Right? It's like a useless analysis. तो ये एक तरह का बेकार आकलन है, जांच है। No offense, but बुरा मत मानिए। life is short, man. You know what I mean? जिंदगी बहुत छोटी है। We could get hit by a missile tonight. This could be World War III, and he's figuring out qualities of stool. अभी अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए एक मिसाइल हमारे ऊपर गिर सकता है और ये यहाँ पता लगा रहे हैं कि अलग-अलग विष्टा का क्या गुणवत्ता होता है। I mean, Pakistan could bomb us tonight, man. पाकिस्तान आज की रात में बम गिरा सकता है। We'll all be trying to chant Hari Krishna, and he would be like, "What kind of stool is that? हम हरे कृष्णा कर रहे होंगे Why कीर्तन are they thinking that that's nectar?" और ये सोच रहे होंगे कि ये विष्टा का गुणवत्ता क्या क्या है। That's very strange. तो ये बहुत ही विचित्र बात है। Let's get into their heads. चलिए हम उनके दिमाग में घुसने का प्रयास करते हैं पता लगाने Why के are लिए they such demons like that? क्यों ये लोग ऐसे असुर हैं। How does someone become a demon like that? कैसे कोई इस तरह का असुर बनता है। Let's measure how much lust everyone has and how much greed, right? We'll get like some kind of a chart, चलिए We'll हम have like a मापेंगे। stock market, right? We'll just, okay, he's got a lot of lust, okay. Oh, okay, lust, greed, that makes sense. Lust and greed, okay. Right? Who cares? तो इस तरह का हम चार्ट बना रहे हैं सभी का कि कौन से It's असुर के all बीच में anartha. कितना काम है कितना It's लोभ है all ये सब अनर्थ है ये unwanted. सब It's all फालतू got अनर्थ a, है। that's what we're talking about. Dots that you'll be like, well, how does he come to that conclusion? और इसीलिए ये खतरा है जब हम अलग-अलग बिंदुओं को जोड़ने का How's he प्रयास करते connecting हैं this jiva tattva with guru tattva? कि कैसे वो इस निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं कैसे वो जीव तत्व को गुरु तत्व से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। But that's why if you can take the the 60,000 foot view, then you can see how it's all connected. तो आप ये 60,000 अलग-अलग तरह के विचारों को एक साथ जमा करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा इसका कैसे सही अर्थ बनता है। Otherwise, it doesn't make sense. Why are you just taking everything individual and not understanding what is the purpose, connection, motivation, and ultimate agenda of these personalities? They're too smart. आप चीज़ों को अलग-अलग तरीके से आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं ये सही नहीं। आप सारी चीज़ों को एक साथ एकत्र करके जानने का समझने का प्रयास कीजिए। It's not just going on whimsically. ये केवल मनगढ़ंत तरीके से केवल आगे नहीं बढ़ रहा है। They are all in agreement. वो सभी लोग आपस में सहमति में हैं। So that this is not a mistake. तो ये कोई गलती नहीं है।
So you should know your enemy, man. तो आपको अपने शत्रु के बारे में जानकारी होनी चाहिए, Otherwise you'll miscalculate वरना आप गलत अंदाजा लगाएंगे and you'll not understand what you're up against. और आप ये नहीं समझ पाएंगे आपके खिलाफ क्या है. That's why I was questioning. Huh? That is why I was questioning these questions. That's why I'm breaking it down for you. तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था, गुरुदेव कह रहे हैं इसलिए मैं इन सारे प्रश्नों को तोड़कर आपको दिखा रहा हूँ. You're just giving me their arguments. आप मुझे सारे बहस दे रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ. But at the end of the day, it's just like they have endless arguments. लेकिन दिन के अंत में हमें ये समझ में आया उनके पास असीमित बहस But है. if you don't connect the dots or the context of what I'm saying, then all of these other variations, it doesn't matter if you don't accept my initial premise of my argument of how I'm connecting those things. लेकिन जो मैं बातों को प्रस्तुत करने का, जो बिंदुओं को आपस में जोड़कर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आप उसको परिस्थिति के आधार पर समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप उससे इन बहसों से केवल प्रभावित होते रहेंगे. Did you have a question or point? क्या आपके पास कोई प्रश्न या कोई बात थी? No? You said right now that you are taking a risk. What? You said right now that you are taking a risk. Oh, thank you. I'm taking a risk? Risk of getting in deep into this topic. So I would like to know why you are taking so much of risk then? I'm asking myself that question. Really, to be honest. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि आपने बताया जब हम इस विषय में गहराई से जाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ा खतरा उठा रहे हैं. तो गुरुदेव कह रहे हैं मैं ये सोच रहा हूँ मैं ये खतरा क्यों उठा रहा हूँ, मैं खुद पता लगाने का He प्रयास. brings a good question, you know? ये अच्छा प्रश्न उठाया. And then once I'm in the middle of it, I'm like, okay, how do I get out of this? जब मैं इसके बीच में पहुंच जाता हूँ मैं सोचने लगा अब मैं इससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ. And then I'm like sucked into it, you know? And then it's like if I don't answer it, then everyone's like, oh, he couldn't answer it. You know? Now he just wants to leave, you know? फंस चुका हूँ. अगर अब मैं उत्तर नहीं दूंगा सब सोचेंगे वो तो उत्तर पता नहीं था, ये बस निकलना चाहते थे बाहर. So it like forces me to have to explain it. तो मैं मजबूर हो गया इसको बताने के लिए, विवरण देने At के लिए. least enough that it's obvious to the majority. इतना कि ज़्यादातर लोग जो है इससे सहमत हो जाएं. So even if I leave after that, it's like, okay, he more or less answered the question. You तो यहाँ know? तक कि मैं चला भी जाऊँ तो सबको लगेगा कि कम या ज़्यादा उन्होंने उत्तर दे दिया. If I leave too soon, everyone will be like, oh, you know, Gurudev couldn't answer the question. अगर मैं जल्दी निकल जाऊँगा तो सोचेंगे वो गुरुदेव ने इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए वो. He got uptight, he got angry, he just गुरुदेव left गुस्सा हो the गए room, और कमरा छोड़कर चले गए. he got defeated. वो हार गए. So then is he my guru? क्या ये मेरे गुरु हैं? Maybe this other guy's a Nitya Siddha, maybe he's my guru, you know? हो सकता है ये जो दूसरा व्यक्ति है वो नित्य सिद्धा वो मेरा गुरु है. They're already thinking like this, man. सोच रहे हैं इन्होंने ऐसा शुरू कर दिया. I'll write the papers of permission. Anybody who wants to go to you, right? I'll already sign the papers. They have my full blessings, man. No problem. और मैंने पहले You ही deserve सारे each other, you know? परमिशन पे हस्ताक्षर कर दिया. आपको पूरा आशीर्वाद है मेरा अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो. Then my load is much lighter, you know what I mean? तो मेरा वजन बहुत हल्का हो जाएगा. Why am I taking the risk? Because it's my service. तो क्यों मैं ये खतरा उठा रहा हूँ? क्योंकि ये मेरी सेवा है. And my Gurudev asked me to explain it to you, to try to help you to understand it. I don't know who can understand it, but I need to hear it, and I'm hoping someone else understands it. तो मेरे गुरुदेव ने ये सारा विवरण मुझे दिया है ताकि मैं बाकी लोगों को ये विवरण देकर उनको समझाने का प्रयास करूं. मुझे नहीं पता बाकी लोग इसको समझ पा रहे हैं या नहीं, लेकिन मुझे खुद ये सारी बातें सुननी है. That's why I put so much, you know, prayer and thought into all of these topics. इसलिए मैंने बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारे विचार इन विषयों के ऊपर डाला. You know, and I'm doing this for 30 years. और मैं ये 30 सालों से कर रहा हूँ. I heard all the arguments. I heard all the different movements. I saw all the deviations. I saw, you know, we already went through all of these different arguments, how to expose it and defeat it, and, you know, for 30 years I'm doing this. तो मैं 30 सालों से ये देख रहा हूँ कैसे वो सही चीज़ों को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे वो विमुख हो रहे हैं. तो मैंने 30 सालों से ये करने का भी Even longer. यहाँ तक उससे भी ज़्यादा. So I'm just trying to help you. तो मैं बस केवल आप लोगों को मदद करने का प्रयास To कर रहा हूँ consider some of these points for yourself. कि आप इन बातों पे स्वयं विचार कर सकें. And then, you know, is what he's saying, is it accurate? Is it valuable to you? And then if you feel that it is, and Krishna gives you intelligence and faith, then take it, accept it.
और कृष्णा से आप प्रार्थना करने का प्रयास कीजिए कि जो भी बातें आपको बताई गई उनमें से कौन सा आपके लिए मूल्यवान था, और आप देखिए कैसे कृष्णा आपको बुद्धि और श्रद्धा देते हैं कि ये चीज़ें आपके मूल्यवान थी। To me, it doesn't matter. I have nothing to lose. मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे So in पास that कुछ भी नहीं sense, है खोने it's के not लिए। really a risk. तो असल में मैं कोई खतरा नहीं ले रहा। It's just like if you're a Kshatriya and you die on the battlefield, like that's a glorious death. जैसे आप कोई क्षत्रिय हैं और आप युद्ध में मारे जाते हैं तो आप एक गौरवशाली मृत्यु पाते So हैं। if you leave your body and you're trying to establish the absolute truth, परम सत्य को स्थापित करने के लिए अगर मृत्यु भी आ जाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है? they already took everything, they already did everything, they already, there's nothing left anyone can do and say against me. तो उन्होंने कर सकते हैं। So what do I mind? What do I care? तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? And if it helps somebody else, great. और अगर इससे किसी और की मदद हो रही है And तो for बहुत ही me, अच्छा। it just reestablishes the truth and my conviction and my confidence and where my faith and understanding is. So it's also beneficial to me. और मेरे लिए भी मैं वापस से जो सत्य है उसको मैं पुनः मैं उसमें और ज़्यादा दृढ़ तरीके से स्थापित होते जा रहा हूँ और ये मेरे लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद है। But it's true, I do sometimes say, is it really worth the effort? लेकिन कई बार मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या ये इतना परिश्रम I करना don't सही know है? how many can really understand what I'm saying or like what I'm saying or can take advantage of what I'm saying. I'm not sure. I'm not sure about that. मुझे पता लेकिन मुझे याद है मैं इन परिस्थितियों में स्वयं दुख भोग रहा था और मेरी कोई मदद करने के लिए नहीं था। And tears went into what we went through and what we realized and how we tried to understand it all. And if that can be shared to help other people, then that's my service, and that's my offering. तो बहुत सारा रक्त, बहुत सारा पसीना और बहुत सारे आंसू बहाए गए इन साक्षात नहीं सुनी। All of the arguments are stupid, foolish. अन्य लोगों की बहसबाजी पूरी तरह बेवकूफ़ी वाली थी, मूर्खता वाली थी। That makes no sense. उसका कोई मतलब नहीं बनता था। Materially, common sense or logical, what to speak of Guru Sadhu Shastra. ना तो भौतिक उसका कोई सामान्य अर्थ बनता था, ना तो गुरु साधु शास्त्र। That's why if you hear the absolute truth according to Guru Sadhu and Shastra, then you can understand what is what. तो जब आप परम सत्य श्रवण करते हैं गुरु साधु शास्त्र के आधार पे, तब आप भेद लगा सकते हैं क्या क्या है। Otherwise, how will you, if it's more and more subtle type of arguments and more subtle types of persuasion and canvassing, how will you be able to decipher it? How will you be able to understand what is true, what isn't, what is to be accepted, what isn't to be accepted? How will you weigh and measure all of that? और जब ये तर्क और ज़्यादा सूक्ष्म होते जाएंगे बहस, तब आपके पास क्या चीज़ें रहेंगी कि आप भेद लगा पाएंगे क्या क्या है, क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। So I hope that's good for now. I think that's way more than enough. मुझे लगता है ये He wants me to take, I gave him this arm and this arm, now he wants a leg. Today, I'll give him my fake leg with the fake steel in there. तो उन्होंने मेरा एक दोनों हाथ ले लिया था पिछली बार, अब मैं अपना जो स्टील वाला पैर उनको देना चाहता हूँ। Now he's got 3 limbs and he's wondering, why are you doing this? तो अब ये मेरा 3 अंग ले चुके हैं, अब ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करते क्यों? Why are you taking such a risk, man? He's giving, I'm just, who am I? You're giving 3 limbs, man. तो ये कह रहे हैं I'm आप just a खतरा guy क्यों उठा रहे from हैं? Pune, you know. मैं हूँ कौन? मैं तो पुणे से हूँ और आप मुझे 3 अंग अपना काट कर दीजिए। I'm just on vacation. I'm going back home soon, you know. मैं तो छुट्टी मनाने आया हूँ, तो बहुत जल्दी घर जाने वाला हूँ। My mommy and daddy are calling me. मेरे मम्मी और पापा मुझे बुला रहे हैं। Are you going to give me back my limbs when you leave or what? तो जब आप वापस जा रहे हैं मेरे I हाथ can पैर मुझे वापस reattach करेंगे या them? नहीं? क्या मैं I'll उसको have to फिर go से for अपने some साथ more जोड़ सकूं? surgery? ताकि मैं और सर्जरी से गुजर सकूं। Maybe not in Pune. पुणे में नहीं करूँगा। He'll take the limbs back to Pune so you come to Pune. वो मेरे हाथ पैर पुणे लेके चले जाएंगे ताकि मुझे सर्जरी। Then you can preach to me when you're getting everything sewn back on there, you know. और तब हम फिर से वहाँ प्रचार करेंगे जब हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। So you said that you answered the question. So you in that said thing, we need to qualify ourselves. So how do we qualify ourselves so that whatever you are speaking, so that we can properly, like, precisely understand it, like you understand from your Shri Gurudev? Are you valuing the information? I understand that the information you are giving, it's too much valuable, and I am not able to properly understand.
So take what you can understand. तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम कैसे स्वयं को योग्यवान बना सकते हैं, जैसे श्रील गौरव महाराज ने आपको समझाया, हम भी उसी तरीके से ग्रहण रख पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, तो आप वो ग्रहण कीजिए जो आप समझ पा रहे हैं। You have small digestion, so just take a couple crackers and. तो आपका हाजमा कमजोर है, तो बस थोड़ा कुछ क्रैकर खा लीजिए, couple pieces of fruit, और थोड़ा बहुत फल खा लीजिए, try to digest that. और उसको हजम करने का प्रयास कीजिए। Right? Someone comes with a big plate of prasad, right? If you have little digestion, you can only pick around and just grab a couple things that you think you can digest, right? अगर कोई बहुत बड़ा प्रसाद का प्लेट लेकर आता है और आपका हाजमा कमजोर है, तो आप उसमें से कुछ चीज उठाएंगे ताकि आप जितना आप हजम कर सकते हैं उतना आप ले पाएं। Now his problem is like, I'm just not satisfied picking around. I have no digestion, right? Why I can't eat the whole plate? आप ये चिंता कर रहे हैं कि मैं इसे संतुष्ट नहीं हूँ कि बस थोड़े थोड़े टुकड़े उठाकर मैं खाऊं, क्यों मैं पूरा, मेरा हाजमा अच्छा नहीं है, मैं पूरा प्लेट क्यों नहीं खा सकता? What to do? तो क्या कर सकते हैं? That's your problem. तो ये आपकी समस्या है, That you have digestion problem. ये आपके हाजमे की समस्या है। So be satisfied with the crackers and the fruit, man. तो फल और क्रैकर से संतुष्ट रहिए। Try to improve your digestion. अपने हाजमे को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। Then when the meal comes next time, maybe you can take a little rice and dalma or something. और जब आपका हाजमा बढ़ेगा, तो अगली बार जब राइस और दालमा आएगा तो आप उसको ले पाएंगे। Without the chilies. और बिना किसी मिर्ची के रहेगी। Jitter, jitter. धीरे धीरे, Gradually. धीरे धीरे। Right? Take what you can. आप उतना लीजिए जितना आप ले सकते हैं। Try to digest it, try to assimilate it, try to understand how it's benefiting you, and then maybe you'll get more appreciation and more type of greed. इसको हजम करने का प्रयास कीजिए, एकत्र करने का प्रयास कीजिए, और धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाने का प्रयास कीजिए, तब आप और ज़्यादा ले पाएंगे। We have to also be fortunate, whatever's being offered to us, that we're fortunate enough to be able to take it. तो हमें इतना भाग्यवान होना होगा कि हमारे सामने जो प्रस्तुत की जा रही है हम उसको ले पाएं। Then that's up to us. और ये अब हमारे ऊपर है। All right, everyone. Thank you very much. I appreciate your kind and long attention सराहना करता हूँ बहुत and patience with me. पूर्वक, धैर्य पूर्वक मुझे। I'm glad you finally realized you're not Nityasiddhas. मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अंत में ये मान लिया कि आप And that there's a difference between stool and nectar. और विष्ठा और अमृत के बीच में एक अंतर होता है। And once tasting the nectar, different qualities of stool is not so important. और एक बार आपने अमृत चख लिया तो अलग-अलग स्तर का विष्ठा उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। It's just meant to be left there, और इसको वहीं केवल छोड़ देने की ज़रूरत है। Just okay, that's not for me. ये वो मेरे लिए नहीं था। Now you know what you don't want. अब आपको पता है आप क्या नहीं चाहते। That's also important. और ये भी ज़रूरी है। It's all waiting. Anytime you want to go back there, no problem. अब वो आपका इंतजार कर रहा है, जब भी आप उसमें वापस आना चाहते हैं। But maybe you'll know too much this time. इस बार आप ज़्यादा जानकारी अपने And not so easily persuaded or cheated और अब इतनी आसानी by से their ठगे नहीं very जाएंगे clever arguments. इस चतुराई वाले बहसबाजियों से। And that's why I'm connecting everything so you can understand the cleverness of their arguments. और इसीलिए मैं सारी चीज़ों को आपको जोड़कर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि वो जिस चतुराई से बहसबाजी रखते हैं आप उसको समझ That's पाएं। why we're such a threat. और इसीलिए हम लोग खतरा हैं। Understand? आप समझ All पाए? right, thank you everyone. धन्यवाद सभी का। Hare Krishna. Ooh, let me go on this one. I only got one limb left. You took 3. I'm walking on just one left leg. All right, did everyone get a nice taste of Gyan? Was it tasty? सबको ज्ञान का स्वाद मिला, अच्छा था? Or was it a lot of heavy lifting? या बहुत ज़्यादा भारी भरकम हमने उठाया। Are you a Jnani? No? Rather just be a devotee. Right? Where's the cookies? Where's the cookies, man? I said everybody cookies.
Sorry, guys. And God bless you. Be happy with the stool. Oh, я не уникаю. Your name is Cinders, you don't need cookies. You're already getting the highest thing. What is cookies? Шила Гурудева ки. Finish or finish an archive.